Good afternoon, dear students. Welcome to GTQ. I hope audio video clear now. Please give reply. Please give reply. Okay. I hope you are preparing well for the exam. Okay. In this session, we discuss questions from the network analysis. Okay. I hope all of you ready with the pen and paper. Okay. I want a response from your side for every question. First, apply your thoughts. Okay. Try to provide your answers also. Okay. Shall we start? I hope everything clear now. Shall we start? Now read this question. Okay. Now what is our requirement? Equivalent impedance with respect to A and the B. Now step by step manner, let us simplify the network. Now for this example, how this resistor inductor, how the resistor inductor both are connected in the series. How this resistor and capacitor both are connected in series. Can I select this here? This entire branch is connected in parallel to this branch. This entire branch connected in parallel to this branch. Now for this parallel combination, can you find out the equivalent impedance for this one? For this parallel combination, if you write the equivalent impedance, what do you write this one as a? We can write the Z1 Z2 by Z1 plus Z2. If you write the respective values in this one, by simplifying this one, for this parallel combination, can you find out the equivalent impedance? Can you find out the equivalent impedance for this one? Check it out. We get the equivalent impedance for this one as a 1 ohm. We get equivalent impedance for this one as a 1 ohm. Now let us simplify further. Let us simplify further. Again, if you read out this figure, for this parallel combination, what are the equivalent impedance? Equivalent impedance is 1. Now let us simplify further. To simplify further, let us use the application of this star delta transformation. In this example, if you have got these 3 elements, how the 3 elements are under the delta? Can you convert this one to equivalent star? Can you convert this delta to equivalent star? If you write the respective values, you can give the names as some, give the name as some Z1, Z2,
Z3, Z4, Z5 and the Z6. Can convert the delta to equivalent star. If you convert delta to equivalent star, correspond to Z1. Now product of adjacent sides, what are the adjacent sides here? 1 and the J1. The denominator sum of all the impedances 1 J1 minus J1, these two will be cancelled out. Then what is the finally net value in the denominator is 1. Now from this one you can convert this Z1 equal to J1, Z1 equal to J1. Similarly can find a Z2, Z3 also, can find Z2 and Z3. You have applied same procedure here, product of adjacent sides, J into J, J square minus becomes a plus. If you simplify this one, correspond Z2 also, what you get is 1. But Z3 is a product of adjacent sides by total impedance. If you simplify this one, you get like this, minus J1. Similarly, can you find out the Z4 and Z5 and Z6 also? Product of adjacent sides by total impedance. Now correspond Z4, what are the adjacent sides here? 1 and the minus J1 by total impedance. 1 J1 minus J1, these two will be cancelled out. Then what remaining value is only 1. Z4 is obtained. Similarly, can you write the steps for Z5 also? Z5, if you simplify, what you get is again J1. What are the Z6? We get is 1. Now correspond to this example, we converted delta to equivalent star. Delta to equivalent star. Can you read out this figure again? Can you read out this figure? If you write the respective values in this one, if you write the respective values in this one, what is the Z3? In this example, what Z3 is a minus J1. This example, what is the Z3? This Z3 is a minus J1. What about the Z1? Z1 is a J1. What is the Z2 is a 1. What is the Z6? Z6 is also 1 ohm. What is the Z4? Z4 is a minus J1. What about last one is the Z5? This Z5 is a plus J1. Now let us simplify further. Finally, what is the requirement equivalent impedance with respect to A and B? Now correspond this example here. This entire combination, all the three elements, how they are connected in the series. If they are in series J and minus J1, can I cancel these two? These two will be cancelled. Again here this entire combination, this entire branch, both are connected to the panel, both are connected to the panel. And for this one, if you draw the again one more simplified figure, what the impedance of this one is a minus J1, impedance of this one is a J1. And the 2 and 1, in this example these two will be cancelled out. 2 and 1 both are connected to the panel, 2 and both are in the panel. If you simplify this one, we get the 2 by 3. If you simplify further, what is the requirement? Finally, equivalent impedance with respect to A and the B. Now J1 minus J1, these should be cancelled out. Now finally, what is the equivalent impedance is the 2 by 3. That equivalent impedance is the 2 by 3 ohms. Okay. Very good, very good. Okay, shall I hope these colors are visible now. Green color, this visible now. Pink color. Saurabh, shall I use this yellow color, blue color visible now? No issue now. I hope these colors are visible now.
Okay, Abhishek Sharma, okay, on the white I will use some other colors, don't worry, sure, I will use other colors. Read the next question. All of you read the next question, just apply your ideas, एक बार आप सोचिए, I will explain. I hope question is visible ना? क्वेश्चन देख लो एक बार. एक बार क्वेश्चन देख लो जी, आई विल एक्सप्लेन. हाँ सी जी वेरी गुड, 2/3. भरत कुमार 2/3 वेरी गुड. इफरान फॉर प्रीवियस क्वेश्चन 2/3. Now for this example, first let us find out the equivalent impedance of this entire part. Equivalent impedance of this entire part. देखिए इधर 2 and 2 the same sections. देखिए this is the first section, second section, third section. In this way infinite number of sections are present. Now for this entire part, now first let us find out the equivalent impedance. For this entire part equivalent impedance, you can give the any name here. Just give the name for this as some R1 resistance. Now first let us find out the equivalent impedance this part. Then after let us go for this part. Okay. For this entire part equivalent impedance is give the name as some R1. Now for this example here 2 and 2 and this is a one section. It is a one section. Now 2 and 2 second section, third section, in this way infinite number of sections are present. With respect to A and B, total number of sections are the infinite. Let us give the resistance of this as R1. Now give the name as some C and the D. If you are looking at C and D, one section is excluded. Then for C and D, total how many sections are there? Infinite minus 1 sections are present. Infinite minus 1 sections, it is approximately equal to again infinite. Previously, when infinite sections are there, we gave the name as a R1. For C and D also approximately infinite sections are there. Again, let us give the equivalent resistance as a R1. Then if you read out this figure, we can draw like this. With respect to C and D, this entire part is replaced by resistance R1. With respect to A and B also R1. If you simplify further, in this example, how this 2 and R1 both are in the parallel. This parallel combination is in the series. We get the R1 equal to 2 plus. Can I write this? Check करो जी. Now I give all the hints. Simplify करो. Simplify करके first can find out R1 value. Simplify this entire expression. Simplify करके can find out R1 value. Anybody give the answers? R1 value.
Anybody R1 value? One plus root 5. 1 plus root 5. Very good, very good. 1 plus root 5. Now this 1 plus root 5, the equivalent is for this entire combination, If you observe carefully, this side also same type of the network is present. This side also same type network is present. Then here, can you draw the simplified figure for this one? Can you draw the simplified figure? Now for this entire part, we already calculated equivalent resistance. Equivalent resistance is R1. In this entire part also, same network is present, Again, can I give the same name here? Equivalent resistance is R1. Then with respect to AB points, how this R1 and R1 both are connected to the parallel. With respect to AB points, R1, R2 both are in the parallel. With respect to AB points, then what is the equivalent resistance? R1 by 2. Regarding R1, just now calculated, what is R1 equal to 1 plus root 5 by 2. Anybody simplified value? 1.618. Very good. Many students gave the reply. Abhishek Sharma, Ankit, Ashish Roy, Aman, ASKGF, SSS. Yes. Formula also can be applied. Yes, Aman, see what's formula can be also applied. Apply कर सकते, formula भी apply कर सकते. Ifran, very good. Aman, formula भी apply कर सकते. Okay, in the regular class I get the formula also. Okay. All of you getting same answers now? Kuldeep Srivatsava. Now read the next question. Question पढ़ो जी एक बार. All of you read the question. Copy करके just apply your ideas first. Everyone has to do calculations. Calculation करो जी. Calculation करने से your concentration increases, your accuracy increases. Don't wait for final answer. पहले आप try करो. I'll give you all the hints. I'll let the necessary steps also. Calculation करो जी. Okay, shall I read the steps? चलिए चेक करेंगे. देखो जी, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होना बोल तो you can go for the nodal analysis or you can go for the mesh analysis. The choice is yours. You can go for any approach. But हमेशा कैसे सोचना बोल तो which one is easier approach? देखिए, in this example, if I go for nodal analysis, you can conclude answer easy way. Reason is देखिए, मान लो let us assume node voltage for this one. देखो जी, एग्जाम्पल में मान लो लेट अस assume नोड वोल्टेज V1, नोड वोल्टेज V2, नोड वोल्टेज is V3 and other one is V4. What about this one? Ground potential. Question में दे दिया इधर ground potential. What is ground potential equal to how much? 0. Ground potential equal to 0. देखिए इधर potential with respect to ground potential difference V2 and ground कितना है जी? 6 volts. कितना है जी? 6 volts. But correspond V2 negative sign is connected, then what V2 answer is minus 6 volts. That means without writing any equation directly got node voltage. इधर देखिए potential difference between V4 and ground, how much, what is the voltage, how much? 12 volts. Correspond V4 positive sign is connected, that means what is the V4 equal to how much? 12. That means without writing any equations directly got the two node voltages. That's relatively when compared to mesh analysis, nodal analysis is easy. What about the mesh analysis से भी check कर सकते हैं इधर. Come to the other one.
देखिए एग्जांपल में विद द V1 एंड V3 दोनों के बीच में विच सोर्स कनेक्टेड है, आइडियल वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड. When ideal voltage source connected with the two non-reference nodes, when ideal voltage source connected with the two non-reference nodes, then we go for the supernode technique. Now with respect to the supernode technique, equation combinedly developed for the node 1 and the node 3 excluding voltage source. चलिए let us write the combined equation for this one. Let us write the combined equation for this one. Let us write the combined equation for this one. Now we are applying the supernode technique. We are applying the supernode technique for the node 1 and the node 3. Now we should write the equation combinedly for node 1, node 3 excluding voltage sources. देखिए with respect to ground potential, what the polarity is the plus. With respect to ground potential, what the polarity is the plus. Now let us write the equation combinedly for node 1, node 3. देखिए इधर plus similar polarities subtraction. V1 minus V2, but resistance value how much, 2 kilo ohm. Again here also plus similar polarities subtraction, you can get the V1 minus V4, but the corresponding resistance is the 2 kilo ohm. Come to V3, now plus subtraction, V3 minus V2 by resistance is the 1 kilo ohm. इधर देखिए प्लस सिमिलर पोलैरिटीज सब्ट्रैक्शन, V3 minus V4 but the resistance is 1 kilo ohm. This entire equation equated to 0. This is a combined equation for the node 1, node 3 excluding voltage source. Now focus on this voltage source. देखो जी voltage source के लिए positive is connected to V1, then we write this as a V1 minus V3. देखिए एग्जांपल में पोटेंशियल डिफरेंस V1 V3 दोनों के बीच में पोटेंशियल हाउ मच है, 12 वोल्ट्स. पॉजिटिव कनेक्ट टू V1, V1 minus V3 इक्वल 12 वोल्ट्स. इक्वेशन 2. देखो जी आपको इधर V2 वैल्यू पता है, देखिए V4 भी पता है. यार क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं आपको, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट I0 वैल्यू. देखिए इधर I0 निकालने के लिए कौन सा वोल्टेज चाहिए आपको, V3. कौन सा वोल्टेज चाहिए आपको, V3. देखिए आप इधर V2 वैल्यू V4 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो बाय सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस. ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके पहले V3 निकाल सकते ना, चेक करो जी. फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट V3 वैल्यू. यार V3 निकालने के बाद फाइनली क्या चाहिए आपको, I0. देखिए I0 इक्वल ऐसे लिख सकते ना, I0 इक्वल V3 by 2 किलो ओम. चेक करो जी, आई गिव ऑल द हिंट्स. कैलकुलेशन आप करो, कैलकुलेशन कर बोलो जी. पहले V3 कैलकुलेट करो, बाद में ट्राई टू फाइंड आउट I0 वैल्यू. हर्षा यू आर गेटिंग कंफ्यूजन. सुपर नोड के लिए विद द टू नॉन रेफरेंस नोड्स आइडियल वोल्टेज सोर्स इज रिक्वायर्ड, नॉट आइडियल करंट सोर्स. आइडियल करंट सोर्स नहीं जी, आइडियल वोल्टेज सोर्स. ओके हर्ष, बोलो जी एनी आंसर्स. I0 वैल्यू, एनीबडी. V3 वैल्यू एनीबडी. give the answers. V3 value. Kushi Kumari ji, already V5 is the ground potential. ground potential. Node 1, node 3 के लिए combined equation already developed. इधर one more term है जी. इधर एक मिनट, और एक term मिस हो गई इधर. One more term is there. Here V3 by 2 kilo ohm. Here one more term is there.
V3 by 2 kilo. Correspond to V3, one more branch is there, V3 by 2 kilo. Include this branch also. Include this branch also. अब solve करो जी. Include this branch also. क्यों बोलते हो? We developed a combined equation for node 1 and the node 3. Node 1, node 3. Check करो जी answers. In the first equation में outer में include करो जी V3 by 2 kilo ohm. Any answers? Answers नहीं आ रहे. Hariprasad saying the V3 is 6 volts. Sakshi saying the V3 is 1 volt. Abhishek saying the V3 is 7.5. Oh, so many answers are coming. Why the so many answers are coming? Joy got the V3 is 6 by 5. Kuldeep saying the minus 6 by 7. Chakraji, many students are saying V3 is the minus 6 by 7. Shall I confirm this answer? V3 value. Chakraji, many students are saying V3 is a. Kuldeep got same answer. Jalu also got same answer. Vivek got some different answer. Hariprasad also got the minus 6 by 5, minus 6 by 7. देखो जब V3 पता है तो can you find out I naught value? I naught value. क्वेश्चन में क्या पूछ रहे? Is asking the current in the microamperes. Is asking current microamperes. बोलो जी फाइनल आंसर्स बोलिए. I naught value. Do the calculation for I naught. Okay, check करो. Many students are saying V3 is a minus 6 by 7. बोलो जी anybody this I naught value? Ifran also got same answer. 428. Check करो जी. Minus 428 microamperes. चेक करो. Okay, shall I confirm? Okay, very good, very good. चलिए come to the next question. एक बार क्वेश्चन पढ़ो जी. एक बार all of you read the question. क्वेश्चन पढ़ो जी. Everyone has to do calculations. Calculation करो जी. Calculation करने से we can avoid the simple calculation mistakes in the exam. Don't wait for answer. Pen paper use करके calculation करो. Jai got some minus 3 by 7. एक बार चेक लो जी जाई. Okay, Ifran also got same answer. Very good.
एक बार क्वेश्चन पढ़ो जी, ऑल ऑफ यू रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो जी एक बार। क्या चाहिए आपको? पावर फैक्टर चाहिए। फॉर दैट वन कैन यू फाइंड आउट कंप्लीट इक्विवेलेंट इंपेडेंस नेटवर्क, कैन यू फाइंड आउट कंप्लीट इक्विवेलेंट इंपेडेंस नेटवर्क। चलिए फर्स्ट लेट अस फोकस ऑन दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ना, द पैरेलल कॉम्बिनेशन इंपेडेंस इज वन, गिव द एनी नेम हियर, गिव नेम इज सम Z, give the name for this one as Z. Then here can you draw the simplified figure for this one? Source voltage the Vs 10 ohms. For this 3 branches के लिए जो equivalent impedance है ना, that equivalent impedance I named as Z. ये 3 branches के लिए जो equivalent impedance है ना, equivalent impedance I named this as Z. देखिए when the parallel branches are given for easy analysis purpose, first you can find out the admittance value. होना बोल तो डायरेक्टली इंपेडेंस भी कर सकते हैं, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इफ यू गो फॉर द एडमिटेंस वी कैन सिंपलीफाई द कैलकुलेशंस। देखो जी एग्जांपल में फॉर दिस एंटायर कॉम्बिनेशन के लिए फर्स्ट लेट अस फाइंड आउट एडमिटेंस वैल्यू। एडमिटेंस फाइंड आउट करने के बाद देन लेट अस कन्वर्ट इन द इंपेडेंस फॉर्म, लेट अस कन्वर्ट द इंपेडेंस फॉर्म। नाउ फॉर दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन, now here how many branches are there? Total 3 branches. Now admittance of this one I get this one as a y equal to y1 plus y2 and the y3. For this entire parallel 3 branches के लिए let us find out the equivalent admittance value, equivalent admittance value. Now for this example here branch 1, but the admittance of branch 1 what do you write this way? 5 plus j5, 5 plus j5. What are the branch 2 is what are the branch 3 is 1 by 20, 1 by 20. चेक करो जी, कैन यू सिंप्लीफाई दिस एंटायर एक्सप्रेशन y वैल्यू? सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या चाहिए आपको? इंपेडेंस। इंपेडेंस को ऐसे लिख सकते हैं ना, रेसिप्रोकल ऑफ एडमिटेंस, रेसिप्रोकल ऑफ एडमिटेंस इज द इंपेडेंस, रेसिप्रोकल ऑफ एडमिटेंस इज द इंपेडेंस। सिंप्लीफाई एंटायर एक्सप्रेशन, पहले एडमिटेंस निकालो, एडमिटेंस निकालने के बाद रेसिप्रोकल ऑफ एडमिटेंस इज द इंपेडेंस। चेक करो जी, डू द कैलकुलेशंस। Anybody impedance value? Impedance value in the rectangular form? Anybody give the answers? Admittance, somebody is saying 3 plus j8. Check karo ji, somebody is saying 3 plus j8 by 20 admittance value. Shall I confirm this answer? Okay, from this one find out the impedance value. If it is the correct answer, try to find out the impedance value. Try to find out the impedance value. Oh Jalu, you are saying the complete answer. Ankit, you are saying the complete power factor बोल रहे हैं आप। Abhishek got the 0.821. Abhishek saying the 0.821. Real value, imaginary value कितना है जी? minus j 2.2. Is it correct? Shall I confirm this answer? Abhishek got this answer. Okay, if
इफ इज द करेक्ट, आपको इधर इंपोर्टेंस पता है तो कैन यू फाइंड आउट द कंप्लीट इक्विवेलेंट इंपेडेंस नेटवर्क, कैन यू फाइंड आउट कंप्लीट इक्विवेलेंट इंपेडेंस नेटवर्क। देखो जी जेड वैल्यू कितना गया इधर 0.821 माइनस जे 2.2, सिंप्लीफाई करने से कैन यू फाइंड आउट इक्विवेलेंट इंपेडेंस, इक्विवेलेंट इंपेडेंस इक्वल टू 10 प्लस जेड। देखो जी हाउ दिस जेड एंड 10 बोथ आर इन सीरीज, देखिए एग्जांपल में जो जेड है ना, जेड एंड 10 बोथ आर इन सीरीज, कैन फाइंड आउट इक्विवेलेंट इंपेडेंस फॉर दिस वन। चेक करो, शैल आई कंफर्म दिस वन आंसर इक्विवेलेंट इंपेडेंस। Same answers. Z equivalent is correct. Jai, very good. Can you write in the polar form? जो Z equivalent है ना, Z equivalent can you write in the polar form? Can you write this Z equivalent polar form? Check करो जी एक बार। (11.04) वेरी गुड। 11.04 एंगल कितना है जी? माइनस 11.49। शैल आई कंफर्म दिस आंसर? देखिए एग्जांपल में आपको इंपेडेंस एंगल पता है, इंपेडेंस एंगल नेगेटिव, इंपेडेंस एंगल नेगेटिव मींस नेगेटिव इज हैपेंस फॉर व्हिच वन हियर? कैपेसिटिव सर्क्यूट, बिकॉज़ हियर कैपेसिटिव रिएक्टेंस माइनस जे एक्सी, inductive reactance is a let's say, that means impedance negative means it happens for which one here? Capacitive, that means nature of circuit is a capacitive circuit. Now मगर क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं आपको? पावर फैक्टर फ्रॉम इंपेडेंस एंगल कैन फाइंड आउट पावर फैक्टर वैल्यू, पावर फैक्टर cos theta. Now can I use this angle here? 11.49. okay, don't get confusion here, power factor angle means angle of the current with respect to voltage. Always this impedance angle, power factor angle have the opposite sign. This impedance angle and power factor angle the opposite sign. क्यों बोलते हो? I इक्वल फार्मूला क्या है? V I इक्वल V by Z. Impedance angle and power factor angle both are in the opposite sign. Then for this example simplify करो जी, and capacitive circuit means what is the nature of power factor is leading. Nature of power factor is leading. कितना है जी आंसर? 0.979 leading. Okay, don't get confusion. Generally many students think as a नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आएगा बोलते लैगिंग, मगर नेगेटिव किसके लिए? इंपेडेंस के लिए. वी आर नॉट फाइंडिंग पावर फैक्टर एंगल फर्स्ट यू आर फाइंडिंग इंपेडेंस वैल्यू. इंपेडेंस वैल्यू नेगेटिव ही हैपेंस फॉर कैपेसिटिव रिएक्टेंस माइनस. ओके, इंपेडेंस एंगल पावर फैक्टर एंगल हैव द ऑपोजिट साइन. क्या बोलते इधर? पावर फैक्टर एंगल बोलते क्या है? एंगल ऑफ द करंट विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज. दैट मीन्स कितना है जी? 0.977 leading. Oh, Pooja also got same answer. Kushi Kumar also got same answer. Very good. Abhishek Sharma same answer. Okay, shall I go to the next one? Good. पहले क्वेश्चन पढ़ो जी, आई विल एक्सप्लेन. I'll have to read the question, I'll explain.
देखिए टू सॉल्व द एनी नेटवर्क पहले क्या करना है, फर्स्ट आइडेंटिफाई द कनेक्शंस। कनेक्शंस आइडेंटिफाई करके पहले चेक करो इज देयर एनी वे टू सिंप्लीफाई द नेटवर्क। नेटवर्क को पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद ट्राई टू राइट द अप्रोप्रिएट मैथमेटिकल इक्वेशंस। इन दैट वे वी कैन सेव द टाइम, वी कैन सेव द टाइम। देखिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करना बोल तो वी कैन गो फॉर सो मेनी मेथड्स, मगर प्रॉब्लम देखे तो इन दिस वन सो मेनी नंबर ऑफ सोर्स आर प्रेजेंट। इफ मोर सोर्स आर प्रेजेंट, सोच लो एक बार, इज देयर एनी वे टू अप्लाई द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक देखो जी, एग्जांपल में आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई नेटवर्क बाय टेकिंग एप्लीकेशन ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए इधर करंट सोर्स इज गिवन। In this example, can you convert the current source into equivalent voltage source? But the equivalent voltage source is a 15 volts. देखो जी, we can apply the source transformation for the dependent source as well as for the independent sources also. You can apply for dependent source also. But whenever you are applying source transformation for dependent source, wherever the dependent source magnitude depends, देखिए एग्जाम्पल में its magnitude depends on the voltage of the 2 ohm resistance. Wherever the dependent source magnitude depends, without disturbing that one, remaining other sources we can apply the transformation. देखिए again for this one also, can you convert this one to equivalent voltage source? Given some VS1. Now 17 3 Vx. If you simplify 51 Vx. Again, can you convert this current source into equivalent voltage source? Convert the current source into equivalent voltage source. Can you read out this figure? Check करो जी. I give all the hints. Figure read ड्रा करो जी एक बार. All of you read out this figure. Okay, can you draw like this? Check कर लो जी एक बार. Okay, let us simplify further. देखो जी, again can you convert this voltage source? Can you convert this voltage source into equivalent current source? How the 3 and 7, how the 3 and 4 both are connected in series. 3 and 4 both are in series. Now we converted this voltage source into equivalent current source. Can you simplify further? देखो जी, example में 7 and 7 both are in the parallel. What is the equivalent distance? How much है? 3.5. Equivalent distance 3.5. Can you convert this current source into equivalent voltage source? Can you convert this current source into equivalent voltage source? If you simplify, you get the 7.5 volts.
Can you read out the simplified figure now? For this parallel combination, what the equivalent is how much? 3.5 ohms. 3.5 ohms. Now for this one, can you write the respective KVL equation? By writing KVL equation, let us assume the current of this is I. Current is I. Check करो जी, can I write the KVL equation for this one? Write the KVL equation for this one. If I write the KVL equation for this one, let us assume the current is I. Because lower potential to higher potential voltage rise. Now we are going to write the KVL equation. देखिए जो I है ना, I circulates in the 3.5 plus 17, 2 and the 9. Now higher potential to lower potential voltage drop 51 Vx. Again here higher potential to lower potential voltage drop. This entire equation equated to 0. Entire equation equal to 0. In this example, two unknowns are there. One is the I, other one is the Vx. Other one is the Vx. In this example here, in the Vx, how much current flowing is the I current. When the current enters at positive terminal, sign for the current is taken as a positive. Sign for the current is taken as a positive. Can you rearrange this equation? देखो जी rearrange किया तो I equal you can get the Vx by 2. Vx by 2. Give the name as the equation 2. Now previously we already got one equation. Give the name as equation 1. अब check करो जी, can you replace the in place of I, can you substitute the Vx by 2? Substitute this equation 2, जो अपना equation 2 है ना, substitute here. Simplify करो. क्यों बोलते क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं इधर आपको? What is your requirement is the? In the question he is asking the Vx value. Is asking the Vx value. Now substitute this equation 2. Substitute the equation 2 in equation 1. Check करो जी, do the substitution. Simplify करो, simplify करने से can you find the Vx value? Give the answers. Jai, if it depends upon the same branch, we should not disturb that one. For remaining sources, we can apply transformation. Wherever it depends, we should not disturb that one. For remaining elements, we can apply transformation. Chakraji, many students are saying the minus 22.47 millivolts. Is it correct? Kushi, Rohan and Abhishek. But in the question he is asking the answer in the millivolts. देखो जी हमेशा आंसर कंक्लूड करते समय यूनिट्स भी चेक कर लो जी, तो यूनिट भी ध्यान से चेक कर लो. आंसर इज आस्किंग द मिलीवोल्ट्स. फोकस ऑन यूनिट्स केयरफुली. क्यों बोलते हो इमेज द आंसर इन द वोल्ट्स आर मिलीवोल्ट्स? अब बोलिए आंसर क्या है इधर? minus 22.47. Shall I confirm this one? Minus 22.47 millivolts. Check करो जी, is it correct? Okay, very good, very good. Many students got same answer. Abhishek, Roshan, Vivek. Pooja, you got some different answer.
Oh, Pooja, you are saying I naught value. Okay, okay. Okay, Jai also got same answer. Very good, dear students. Chaliye. Okay. Dear students, here intentionally I have taken little lengthy questions. क्यों बोलते हो कैलकुलेशन प्रैक्टिस चाहिए. By looking these questions, don't lose the confidence. एक बार क्वेश्चन पढ़ो जी एक बार. Now for this example, what is your requirement? Question में क्या पूछ रहे हैं? Dependent current source value. That means we have to find out this magnitude of this dependent current source. 5 Vx value you have to find out. चलिए इधर to find out this one you can go for so many methods. Here I am going for the mesh analysis. Okay, for this example. For this example, loop current this one give the name as some I1 current. Now loop current this is the I2. Loop current is the I3. Loop current is the I4. I1, I2, I3 and I4. I1, I2, I3 and I4. आप चेक करेंगे. देखो जी एग्जाम्पल में जो I4 है ना, I4 आंसर डायरेक्टली बोल सकते हैं आप. एग्जाम्पल में जो 40 एम्पियर्स है ना, 40 एम्पियर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स. जो अपना I4 है ना, I4 इज आल्सो डाउनवर्ड्स. I4 आल्सो डाउनवर्ड्स. आप ये सिंप्लीफाई किया तो चेक करो इधर I4 इज इक्वल 40 एम्पियर्स. सिंप्लीफाई करने से वी गॉट द I4 इज इक्वल 40 एम्पियर्स. I4 इक्वल 40 एम्पियर्स. चलिए come to the next one. Next let us see the KVL equation. Next let us write the KVL equation correspond to loop 1. Okay, next let us write the KVL equation correspond to loop 1. देखो इधर higher potential to lower potential voltage drop. जो अपना I1 करंट है ना, I1 करंट सर्कुलेट्स इन 10, 5 and the 6. 10, 5 and 6. If you add the all the resistances, 21 I1 plus जो अपना 5 ohms है ना, 5 ohms में I1 is acting downwards, मगर I2 is upwards, opposite direction. Then what is the sign for this one is a minus 5 I2. जो अपना 6 ohms है ना, 6 ohms में I1 downwards but I4 is upwards, opposite direction. minus 6 I4. Now equation 1 is completed. This entire equation equated to 0. Entire equation equal to 0. Equation 1 is completed. Come to the next equation. देखो जी जो अपना करंट सोर्स है ना, करंट सोर्स कॉमन फॉर मेश 2 एंड द मेश 3. करंट सोर्स कॉमन फॉर मेश 2 एंड द मेश 3. When the current source common for the two meshes, we go for the super mesh technique. With respect to super mesh technique, equation combinedly developed. With respect to the super mesh technique, equation combinedly developed for mesh 2 and mesh 3. Mesh 2, mesh 3, excluding current source. If you write the combined equation, जो अपना I2 है ना, I2 circulate the 5 and the 20. Write the 20 I2. Sorry, 25 I2. जो अपना I2 है ना, I2 सर्कुलर 5 and 20, 25 I2. जो 5 ohms है ना, 5 ohms में I2, I1 in the opposite direction. Let the minus 5 I1. Come to I3.
I3 circulates the 15 and 2, 15 and 2, we read the 17 I3. In this 2 ohm resistance, I3, I4 in the opposite direction, we read it as minus 2 I4. This entire equation equated to 0. Now it is a combined equation for the loop 2 and loop 3, excluding current source. Now come to this current source set. I3 is acting upwards, but I2 is a downwards. Then we write it as I3 minus I2. I3 minus I2 equal to, what is the value, how much here? 5 Vx. Equation 3. Now come to one more term, Vx value. अब Vx relation check करेंगे. जो अपना Vx है ना, Vx is a voltage across the 5 ohm resistance. Vx is voltage across the 5 ohm resistance. 5 into. When the current enters at positive terminal, I2 is entering at positive terminal. Sign for the current is taken as a positive. When the current enters at negative terminal, sign for the current is taken as negative. जो Vx है ना, Vx is a voltage across 5 ohm resistance. I2 किधर एंटर हो रहा है? पॉजिटिव में एंटर हो रहा है, एंड I1 इज एंटर कर द नेगेटिव, साइन फॉर दिस में द माइनस. अब चेक करो जी, आई गिव ऑल द इक्वेशंस. क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं आपको? डिपेंडेंट करंट सोर्स वैल्यू. डिपेंडेंट सोर्स करंट कंक्लूड करने के लिए क्या चाहिए आपको? Vx चाहिए. Vx के लिए कौन सा करंट चाहिए आपको? I1 I2 करंट चाहिए. देखो जी, I4 तो ऑलरेडी कंक्लूड किया इधर with help of the remaining equations. देखिए इधर I1 I2 निकाल सकते हैं ना आप. चेक करो जी, ट्राई टू फाइंड आउट I1 I2 वैल्यूज. I1 I2 फाइंड आउट करने के बाद फाइंड आउट द Vx वैल्यू. Vx फाइंड आउट करने के बाद फाइनली क्या चाहिए आपको? डिपेंडेंट करंट सोर्स वैल्यू चाहिए. डिपेंडेंट करंट सोर्स वैल्यू क्या है इधर? 5Vx. चेक करो जी, आई गिव ऑल द इक्वेशंस. अब सिंपलीफाई करके बोलिए आंसर्स. Okay. Vx value, don't worry. Jai, in the regular class I gave some simple logics how to conclude the answers easy way for locus diagrams. I hope you remember that one. Somebody is saying the Abhishek got the final answer, minus 24.1 is saying. Shall I confirm? Kushi Kumar is saying that 24 amperes. Shall I confirm? Minus 24. Check करो जी, minus 4.82. Is it correct? Vx value? And we are getting approximately minus 24.1 amperes. Shall I confirm this one? Check करो जी, minus 24.1 dependent source value. Vivek got the 20.78 volts. Vivek, you are getting different answers. Abhishek, Kushi got some similar answers. Slight variation, don't worry. अदर स्टूडेंट्स की रिप्लाई देना है जी, कैलकुलेशन करना है जी आपके लिए. क्वेश्चन सब कुछ कैलकुलेशन करना है. कैलकुलेशन करने से धीरे धीरे आपका ब्रेन में दो जो न्यूरॉन्स रहते हैं ना, न्यूरॉन्स विल बी एक्टिवेटेड. एक बार न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो गए ना, योर मेमोरी पावर इंक्रीजेस, योर कंसंट्रेशन इंक्रीजेस. बोलिए आंसर्स बोलिए. ओनली 2 स्टूडेंट्स गेट आंसर्स. रिमेनिंग स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? आंसर्स के लिए वेट कर रहे हैं क्या?
Shall I go to next one? Yes, Pushi Kumari is saying the same answer. Dear students, by looking these lengthy questions, don't lose the confidence. Intentionally I have taken the lengthy questions only. क्यों बोलते हो एग्जाम में especially 2 marks questions, they may give lengthy questions also. ऐसे नहीं कि each question carries only 30 seconds, ऐसा नहीं होता है. Sometimes it may take the 3 minutes, 4 minutes, sometimes 5 minutes also. In the exam also, whenever you are attempting this lengthy questions, don't try to attempt at the starting itself. पूरा easy questions, moderate questions होने के बाद at the end go for this lengthy questions. क्यों बोलते बीच में if you do any simple mistake in any one of the equation, complete answer changes. Okay. चलिए क्वेश्चन पढ़ो जी. I'll have to read the question. Okay. चलिए इन दिस एग्जाम्पल क्या चाहिए आपको? मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इम्पीडेंस इज गिवन. कितना है? मैग्नीट्यूड हाउ मच फॉर दिस एग्जाम्पल इज 250 ohms. अगेन हियर सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज गिवन. क्वेश्चन में क्या पूछे आपको? इज आस्किंग द कैपेसिटेंस वैल्यू एंड गिव वन स्टेटमेंट V0 लैक्स दिस इनपुट वोल्टेज बाय बट एंगल हाउ मच है? 30 degrees. चलिए एग्जाम्पल में कैन यू अप्लाई द करंट डिवीजन वोल्टेज डिवीजन टेक्निक फॉर दिस वन? Voltage division technique for this one. देखो जी in this example reactance of this one can I this में से 1 by j omega c 1 by j omega c ऐसे लिख सकते हैं ना. देखिए इधर होना बोल तो minus j by omega c लिख सकते हैं. If you shift the denominator you get the plus. Capacitive reactance is obtained. Can you apply the voltage division technique for this one? देखो जी V0 equal to जो अपना इनपुट वोल्टेज ना distributed with the first element and the second element. Can you apply the voltage division technique for this one? V0 equal to total voltage into similar impedance. What is similar impedance? is the 1 by j omega c. That means capacitive reactance by total impedance. We write this with R plus 1 by j omega c. 1 by j omega c. Can you simplify this entire expression? Check करो जी. If you simplify this entire expression, this V0 by Vi equal to we get this one as a omega RC plus 1. Now we got the expression here. देखो जी for this one can you find out the respective angle for this one? देखो जी numerator only real values are present. Can you find out the angle for this one? If you find out the angle for this one, देखो if you find out the angle for this one, tan theta equal to what is the imaginary by real. Imaginary कितना है जी? omega RC. Real value how much है? 1. Imaginary by real. In the data itself angle was given. Question में दे दिया, चेक कर लो. What is the angle how much है? 30 degrees. Omega RC. If you simplify this one, देखिए एग्जाम्पल में if you simplify this one, tan 30 means what is it? 1 by root 3. Omega RC. If you rearrange this equation, we can write this 1 by omega c equal to
root 3 R, root 3 R. Now we got one relation between the capacitive reactance and resistance, capacitive and resistance. Come to the next step. Next step, in the data itself, impedance magnitude is given. Now RC circuit, RC circuit. Now for this RC circuit, can you find out the respective impedance value? Can you find out the respective impedance value? RC circuit के लिए impedance how do you reduce with the total impedance is the R square plus XC square. X equal to 1 by omega C. X equal to 1 by omega C. Now जी impedance value is given in the question itself. Impedance value कितना है इधर 250. R square. देखो जी 1 by omega C, 1 by omega C प्लेस में पुट कर सकते हैं ना root 3 R, root 3 R. चेक करो जी, सिंप्लीफाई करके पहले R निकाल सकते हैं ना. गिव द आंसर्स एनीबॉडी. फर्स्ट गिव द आंसर फॉर R वैल्यू. गिव द आंसर फॉर R वैल्यू. Yes, Jai, your statement correct. That's why to avoid the anxiety, प्रैक्टिस करते समय क्या करना है आपको, टाइम बाउंड अलार्म रख के प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस करते समय. गिव द आंसर्स. आर वैल्यू कितना है जी? आर वैल्यू ओके ऐश्वर्या, आर वैल्यू 125. वेरी गुड वेरी गुड. आर वैल्यू आ गया 125. देखिए आपको ये रिलेशन पता है. रिलेशन क्या है इधर? 1 by ओमेगा सी. ओमेगा बोलते एक्सपेंशन क्या है जी? ओमेगा इज 2 पाई एफ सी. नो रूट 3 आर. आर प्लेस में पुट कर सकते ना 125. चेक करो जी. आई गिव ऑल द हिंट्स. इधर ओमेगा वैल्यू देखिए एग्जांपल में ओमेगा बोलते 2 पाई एफ. आर वैल्यू कितना है जी? 125. क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दे दिया, चेक कर लो. फ्रीक्वेंसी कितना दिया जी? फ्रीक्वेंसी हाउ मच? 50 हर्ट्ज. क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दे दिया, चेक कर लो. फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज. देखो इधर बाई पुटिंग द एफ इक्वल 50 हर्ट्ज सिंप्लीफाई करके सी वैल्यू निकाल सकते ना. बोलिए आंसर्स बोलिए. गिव द आंसर्स. फाइंड कैपेसिटेंस वैल्यू. विवेक कुमार, इफरान got the. Oh, very good, very good. Akshay Srivastava, very good. Very good, Srivastava. Akshay Srivastava, very good, very good. विवेक सिंह, वो ऐसा नहीं कर सकते जी. दैट इज द इनकरेक्ट कॉन्सेप्ट. शुड नॉट डू लाइक दैट. देखिए एज पर द आंसर प्रोसीजर चेंज नहीं करना है विवेक सिंह. गिवन एंगल इज नॉट पावर फैक्टर एंगल. गिवन एंगल क्या है? दैट इज द एंगल बिटवीन द आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज. ओके. What is the answer? 14.7 microfarads. Very good, very good, very good. Okay. Vivek Singh, I hope you got that point now. चलिए. Now क्वेश्चन पढ़ो जी एक बार. Now it is from resonance. देखिए in the resonance if you are able to remember the formulas we can save the time the exam. एक बार सोचिए आप by using which formulas we can save the time ये क्वेश्चन के लिए. एक बार सोचो जी. ओके. अभिषेक शर्मा, फेजर इट बिकम्स लेंदी. अदर क्या क्या करना है अभिषेक शर्मा जी? अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टारगेट क्या है? कम समय में आंसर चाहिए. दैट इज योर टारगेट. इन दैट वे ट्राई टू सेलेक्ट द मेथड. ओके. फेजर डायग्राम डेवलप करके पूरा सिंप्लीफाई करके ऐसा मत करो जी. ओके.
सोचिए एक बार, RLC सीरीज सर्क्यूट, वेरी गुड श्रीवास्तव। देखो जी, इन दिस गिवन एग्जांपल आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पता है। देखो जी, आपको इधर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पता है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते ना, f naught equal to 1/2 pi root LC। कैन आई यूज दिस फॉर्मूला? देखो जी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना है इधर? एल वैल्यू, कैपेसिटेंस वैल्यू कितना है जी? 0.5 नैनो। चेक करो जी, ये पूरा सिंप्लीफाई करके, देखो जी एग्जांपल में ये पूरा सिंप्लीफाई करके पहले एल वैल्यू निकाल सकते हैं ना, कैन फाइंड आउट इंडक्टेंस वैल्यू। चेक करो जी, फर्स्ट डू द कैलकुलेशन फॉर एल वैल्यू। एल वैल्यू निकालो जी, एनीबॉडी आंसर्स एल वैल्यू? ओके, ट्राई टू फाइंड आउट एल वैल्यू। एल वैल्यू निकालने के बाद देखो जी, आफ्टर फाइंडिंग एल वैल्यू, बैंडविड्थ के लिए कैन आई यूज दिस फार्मूला, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू, फार्मूला क्या है सीरीज सर्क्यूट के लिए? R/L। मगर R/L बोलते यूनिट क्या है सर? रेडियंस पर सेकेंड, मगर देखिए क्वेश्चन में यूनिट क्या दिया सर? इट वाज गिवन इन टर्म्स ऑफ हेर्ट्ज। देन कैन यू डू द कन्वर्शंस फॉर दिस वन? सर कन्वर्शन कर सकते ना? देखो जी, इफ यू एक्सपैंड दिस ओमेगा वी कैन राइट द F2 माइनस F1, F2 माइनस F1 इक्वल टू राइट द R/2 pi। क्यों बोलते हो, जो अपना फ्रीक्वेंसी है ना, बैंडविड्थ है ना, बैंडविड्थ गिवन इन टर्म्स ऑफ हेर्ट्ज, व्हाट इज द वैल्यू गिवन एज 20 किलोहर्ट्ज, 20 किलोहर्ट्ज, R/2 pi। चेक करो जी, आई गिव ऑल द हिंट्स। अब कैलकुलेशन कर सकते हैं ना आप? पहले क्या करो, ये पूरा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करके एल वैल्यू फाइंड आउट करो, एल वैल्यू निकालने के बाद जस्ट पुट द एल वैल्यू हियर, सिंप्लीफाई करो जी, सिंप्लीफाई करने से यू गेट द रेजिस्टेंस, सिंप्लीफाई करने से यू गेट द रेजिस्टेंस। चेक करो जी, आंसर्स बोलिए, आंसर्स, आई गिव ऑल द हिंट्स। पहले एल निकालो, फाइंड आउट द इंडक्टेंस वैल्यू। Oh, very good, Rahul Kumar. Very good, dear. Congratulations, Rahul Kumar. Akshay, and wish you all the best for your future goals also. Akshay Srivatsav. R value, Aisha Rai is saying the 1.59. Shall I confirm this answer? one point five nine ohms. Check karo ji, shall I say this one? 1.59 ohms. Now who gave this answer? Ifran also got same answer. Pushi Kumari also got same answer. Aishya Rai also got same answer. Vivek also got same answer. Very good, dear students. Good. Remain student, करो जी कैलकुलेशन, करो जी थोड़ा।
ओके चलिए कम टू नेक्स्ट वन. It is a MSQ question. You have to analysis carefully. क्यों बोल तो हर एक ऑप्शन चेक करना है नहीं ना. It may take little more time also. थोड़ा analysis calculation you have to analysis very carefully. Okay. एक बार क्वेश्चन पढ़ो जी. क्वेश्चन पढ़ो जी एक बार. MSQ क्वेश्चन ना. ओके चलिए देखो जी एग्जाम्पल में पहले क्या करेंगे. लेट्स राइट द रेस्पेक्टिव इक्वेशंस फॉर दिस वन. लेट्स राइट द रेस्पेक्टिव इक्वेशंस फॉर दिस वन. देखो जी इक्वेशन लिखने के लिए जो करंट है ना, करंट वाज गिवन, इंस्टेंटेनियस करंट वाज गिवन. कैन यू राइट इन द पोलर फॉर्म? कैन राइट द पोलर फॉर्म. देखो सर पीक वैल्यू कितना है जी 6√2. आरएमएस वैल्यू कितना है इधर? आरएमएस वैल्यू कितना उधर 6 एम्पियर्स. एट एंगल हाउ मच है 0. इधर भी पोलर फॉर्म लिखते समय डोंट गेट कंफ्यूजन. देखिए सपोज इफ यू द पीक वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर्स आते हैं ना दैट विल गेट इनटू द पीक वैल्यू. एंड सपोज इफ यू द आरएमएस वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर्स आते हैं दैट इज आल्सो आरएमएस वैल्यू. देखिए ऑप्शन में से दे दिया ना करंट वैल्यू गिवन लाइक दिस ना. इधर कुछ भी मेंशन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट जो गिवन वैल्यूज है ना, गिवन वैल्यूज आर टेकन एज ए आरएमएस वैल्यूज. ऑप्शन ऐसा दिया ना IX करंट I0 करंट कुछ भी नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट वी शुड कंसीडर द गिवन करंट्स एज आरएमएस करंट्स. ओके आरएमएस करंट्स करने के लिए जो सोर्स है ना आई एम राइटिंग रेस्पेक्ट टू आरएमएस वैल्यू. पीक वैल्यू 6√2 है, आरएमएस वैल्यू कितना है 6, एंगल इज 0. देखो जी ये पार्ट के लिए कैन यू फाइंड आउट रेस्पेक्ट टू इंडक्टिव रिएक्टेंस. फॉर्मूला क्या है इधर ओमेगा एल. ओमेगा वैल्यू पता है आपको, ओमेगा वैल्यू दे दिए इधर. एंड एल वैल्यू आल्सो नोन. एल वैल्यू कितना है जी 0.5 मिली हेनरी. 0.5 मिली हेनरी इधर देखिए. नो फॉर दिस वन कैन फाइंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस -j -j/ओमेगा c. देखिए आपको ओमेगा वैल्यू पता है एंड सी वैल्यू पता है. सिंप्लीफाई करके एक्सी वैल्यू निकाल सकते हैं ना. चेक करो जी. फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट रेस्पेक्ट टू एक्सएल वैल्यू एक्सी वैल्यू. ये दोनों वैल्यू निकालो जी पहले. एक्सएल वैल्यू एक्सी वैल्यू बोलिए, आंसर्स बोलिए पहले. Give the answers. All of you give the answers for that one first. Anybody answers that XL value, XC values? Anybody answers XL value कितना है जी? Inductive reactance. Answers. Vivek Kumar saying the J20. XL value कितना है जी? XL value, XL. आंसर्स पहले आंसर्स बोलो जी. यू आर गोइंग फॉर अदर टॉपिक. पहले आंसर्स बोलो जी. एक्सएल वैल्यू 10 खुशी कुमारी. एक्सी इज इट इज 10. अदर वन इज 40. अदर वन इज 40. शैल कंफर्म? चेक कर लो जी एक बार. देखिए अब क्या करेंगे. लेट अस गो फॉर द नोडल एनालिसिस. लेट अस नोड वोल्टेज V. नोड वोल्टेज V. देखो जी विथ रेस्पेक्ट ग्राउंड पोटेंशियल व्हाट द पोलैरिटी फॉर दिस वन इज द प्लस. व्हाट द पोलैरिटी इज द प्लस. कैन यू राइट द KCL इक्वेशन हियर
for this example here by KCL. Now 6 is the incoming current, 6 is the incoming current. We write this V naught by J10. Now here plus subtraction V minus 30 I naught 30 minus J40, 30 minus J40. देखो इधर plus go to subtraction, equation 1. In this equation 1, how many unknowns are there? 2 unknowns. One is the V, other one is the I naught, देखिए इधर I naught is the current of this one. देखो जी I naught equal to क्या लिख सकते हैं इधर V by J10, then in this example आप ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको rearrange किया तो it is V equal to we can write the J10 I naught rearrange किया तो ऐसे लिख सकते हैं ना V equal J10 I naught. Now it is the equation 2. देखो जी जो इक्वेशन 2 है ना, इक्वेशन 2 ले जाके इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं ना. V इक्वल टू इधर क्या करो आप, जो V प्लेस में क्या करो, जस्ट सब्स्टिट्यूट द इक्वेशन 2. V प्लेस में जस्ट इक्वेशन 2 सब्स्टिट्यूट करो. सब्स्टिट्यूट करने के बाद ट्राई टू फाइंड आउट रेस्पेक्ट टू I naught वैल्यू. चेक करो जी, आई गिव ऑल द हिंट्स. पहले I naught कैलकुलेट करो. सब्स्टिट्यूट द इक्वेशन 2, जो V इक्वल कितना है जी J10 I naught. सब्स्टिट्यूट द इक्वेशन 2 इन दिस वन. पूरा सिंप्लीफाई करो. सिंप्लीफाई करके I naught निकालो जी एक बार. सिंप्लीफाई करो. सिंप्लीफाई करके ट्राई टू फाइंड आउट I naught वैल्यू. Okay, Shubham, don't worry. Generally in the Purana papers they give the simple values. They give very simple values. I naught find out करो जी. Anybody answers? Eight plus J6. Check करो. Shall I confirm this answer? 8 plus J6 I naught value. In one of the option is asking the I naught value. Okay, I naught हो गया. और shall I confirm this one? Abhishek Sharma got this answer. देखो जी I naught आ गए तो देखिए, कैन यू अप्लाई द KCL एट दिस पॉइंट? इफ यू अप्लाई द KCL एट दिस पॉइंट, देखो जी एट दिस पॉइंट इफ यू अप्लाई द KCL, 6 इज द इनकमिंग करंट. देखो जी 6 इज इनकमिंग करंट, I naught इज द आउटगोइंग करंट. जो Ix है ना, Ix आल्सो आउटगोइंग करंट, Ix आल्सो आउटगोइंग करंट. कैन आई सब्स्टिट्यूट द ऑल द रिस्पेक्टिव वैल्यूज इन दिस वन? देखो जी एग्जांपल में we applied KCL here. 6 incoming current. देखिए I naught is outgoing, Ix also outgoing. 6 equal to 8 plus J6 plus Ix. सिंप्लीफाई करो जी. सिंप्लीफाई करके Ix निकाल सकते हैं ना. Try to find out Ix value. Anybody answers? Simply apply the KCL for this one. Irfan, what is the answer? Minus 2 minus J6. Shall I confirm this one? Minus 2 minus J6. और क्या चाहिए जी? I naught चेक कर सकते हैं आप, Ix चेक कर सकते हैं. और क्या पूछ रहे हैं आपको? पावर डिसिपेशन. और क्या पूछे? पावर डिसिपेशन 30 ओम रेजिस्टर.
ये पावर डिसिपेशन के लिए कौन सा करंट चाहिए आपको, Ix करंट चाहिए। देखो जी एज पर गिवन इन्फॉर्मेशन इधर 30 ओम्स में पावर निकालने के लिए कौन सा करंट चाहिए आपको, Ix करंट चाहिए। कैन फाइंड आउट Ix मैग्नीट्यूड हियर। देखो जी कैन राइट दिस Ix वेल इन द पोलर फॉर्म, इधर ऑप्शन इज गिवन इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म, मगर इधर पावर निकालने के लिए वी नीड अ कंप्लीट मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालो जी, इधर मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हैं, इधर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। कैन राइट दिस सर। करंट मैग्नीट्यूड निकालो जी, ट्राई टू फाइंड आउट करंट मैग्नीट्यूड फॉर दिस वन। क्यों मतलब वी हैव टू फाइंड आउट पावर ना। अब पावर की किधर चाहिए आपको, पावर इन द 30 ओम रेजिस्टर, पावर इन 30 ओम रेजिस्टर। कैन आई राइट दिस सर, दिस Ix मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर मल्टीप्लाई द रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है 30, रेजिस्टेंस वैल्यू 30। चेक करो जी, आई गिव ऑल द हिंट्स। पहले क्या करो, जो रेक्टेंगुलर फॉर्म है ना, ट्राई टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ Ix। मैग्नीट्यूड निकालने के बाद ट्राई टू फाइंड आउट पावर आई स्क्वायर आर। चेक करो जी पावर कितना है। अभिषेक शर्मा सेइंग द ABD आर द करेक्ट, ABD इज सेइंग पावर कितना है जी। खुशी कुमार यू आर सेइंग द 6.32 इज द करंट। ओके वेरी गुड, दैट 6.32 is the current. Can you find out the respective power? Can you find out the power also? $1200. How much power you are getting as a 1200? मगर क्वेश्चन में क्या दिया जी, हाउ मच पावर 600 वाट्स। आप सी ऑप्शन देखे तो आंसर वी आर गेटिंग एज ए 1200। देखो जी आंसर वी आर गेटिंग 1200, मगर ऑप्शन में सी ऑप्शन देखे तो पावर कितना दिया इधर 600। ओके और क्या है जी, एवरेज पावर डिसिपेशन अक्रॉस इंडक्टर। देखो जी इंडक्टर इज नॉट हैविंग द एनी एक्टिव पावर, डिसिपेशन हैपेंस ओनली इन द रेसिस्टर। इंडक्टर के लिए डिसिपेशन कितना होता है, 0। दैट्स व्हाई जो लास्ट स्टेटमेंट है, लास्ट स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, but if given as a average power dissipated across the inductor 0 only, yes। ideal inductor के लिए no power dissipation in the presence, power dissipation happens only in the resistor। that means as per given options which are the correct here, first option, second option and last option ABD। very good, try to do calculations carefully for this MSQ questions except third one, remaining all options are correct। Okay, let us see some more questions। क्वेश्चन पढ़ो जी एक बार, all of you read the next question। Read the next question। देखिए what is our requirement is a resonant frequency। let's verify। देखो जी correspond to this example here, this branch 2, जो अपना branch 2 है ना, branch 2 है the only resistor।
in this particular example all the branches are in the parallel, in that one of the branch have the only resistor. जो resistor है ना, resistor does not influence in the calculation of the resonant frequency. Suppose if this branch has the only pure resistor, only pure बोलते not having combination of the resistor inductor, combination resistor capacitor, if they are not present like that, जो resistance है ना, it does not influence in the calculation of resonant frequency. क्यों बोलते हो resonant frequency के लिए क्या चाहिए? We need the imaginary part. Under resonance condition, circuit behaves as a resistive. Resistive बोले तो what will happen here? Imaginary part of the equivalent admittance. Imaginary part of the equivalent admittance equal to 0. होना बोलते problem we can solve by using admittance concept. नहीं तो we can use by using impedance concept also. Okay. That's why in this example no need to focus on this one, just focus on this branch 1 and the branch 3. देखो जी branch 1 के लिए जो admittance है ना, give the name as some y1, जो branch 3 है ना admittance is one, give name as a y3. No need to focus on the branch 2, only real part is the present. देखो जी अपना branch 1 branch 2 दोनों कैसे हैं? पैरेलल. पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो इक्विवेलेंट एडमिटेंस है ना, आई गिव द नेम एज y, y1 प्लस y3. जो अपना y3 y1 दोनों है ना, बोथ आर कनेक्टेड पैरेलल. इफ राइट द रेस्पेक्टिव एक्सप्रेशंस दिस वन, देखो जी y1 इक्वल टू हाउ डू रेडिस में से J by XC, और टू अवॉइड कंफ्यूजन आप होना बोलता है आप ऐसा लिख सकते हैं माइनस JXC कैपेसिटिव रिएक्टेंस प्लस करस्पॉन्ड ब्रांच 3 ब्रांच के लिए कैसे लिख सकते हैं? वी रेडिस में R प्लस JXL. In this one what is your requirement? You have to separate the imaginary part. देखो जी एग्जाम्पल में इधर इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने के लिए can I multiply the conjugate of this one? If you multiply conjugate this one, what will it be? R minus JXL. देखो जी if you separate this respect to imaginary part, what do you write this as? If you shift this numerator कैसे लिख सकते हैं इधर? J by XC. देखिए if you multiply these two terms, what is the real part of this one is done? Let us separate the respect to real and the imaginary part. XL by देखो जी मल्टीप्लाई करने से रियल एंड इमेजिनरी ऐसे सेपरेट कर सकते हैं. यार क्या चाहिए आपको? अंडर रेजोनेंस कंडीशन जो इमेजिनरी पार्ट है ना, दिस एंटायर इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 0. जो इमेजिनरी पार्ट है ना, दिस एंटायर इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 0. Entire imaginary part is equal to 0. If this entire expression equal to 0, देखो जी सिंप्लीफाई करने से आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 by XC equal to XL by R square and the XL square. What we are doing here, this entire imaginary part is equal to 0. Rearrange करने से we get expression like this. Then in this example XC equal to, we can write this 1 by omega C. What about XL equal to omega L R square omega L whole square. अब चेक करो जी, क्वेश्चन में R वैल्यू दे दिया, इधर L वैल्यू पता है, C वैल्यू पता है, अननोन क्या है जी? ओनली ओमेगा वैल्यू. चेक करो जी, कैपेसिटेंस वैल्यू पता है आपको 0.2, L वैल्यू कितना है इधर 4 हेनरी, रेजिस्टेंस वैल्यू 2 ohms. बाय पुटिंग R वैल्यू, L वैल्यू, C वैल्यू सिंप्लीफाई करके ओमेगा निकाल सकते हैं ना. चेक करो जी, आई गिव ऑल द हिंट्स. चेक करो जी, सिंप्लीफाई करके ट्राई टू फाइंड आउट ओमेगा वैल्यू. एनीबॉडी आंसर्स? एस अभिषेक शर्मा. Vivek got the 2 radians per second. Anybody? Manoj Kumar got the 1 radians per second. Oh, 2 आंसर्स. एक ऐसा आ गया जी पूरा स्टेप देने के बाद भी 2 आंसर्स आ रहे हैं आपको.
और एक बार चेक कर लो एक बार। वन रेडियंस पर सेकेंड। चेक करो अभिषेक एंड खुशी कुमारी, इफरान, many students are saying 1 radians per second. Very good dear students. Okay, देखिए actually if you come to strictly speaking, याद है आपको in the regular class I discussed about the practical tank circuit. I hope you remember that one. Practical tank circuit. Practical tank circuit बोलते हो resistor inductor combination connected in parallel to the capacitor. That means indirectly we can convert as a network के लिए resonant frequency formula is same as our practical tank circuit. If you are able to remember that formula, instead of writing all the steps, directly भी आंसर बोल सकते हैं आप, डायरेक्टली आंसर बोल सकते हैं. दैट्स वाई स्पेशली इन द रेजोनेंस टॉपिक तो टाइम सेव करने के लिए फार्मूला सब कुछ ऐड रख लो, नहीं तो क्या करना है ये पूरा स्टेप सिंप्लीफाई करके ये करना बोलते इट टेक द लिटिल मोर टाइम. That means indirectly given question is come under the ideal tank circuit, practical tank circuit. Okay, चलिए, can you read the next question? क्वेश्चन पढ़ो जी एक बार. क्वेश्चन पढ़ो जी एक बार. ओके, वेरी गुड. देखो जी इधर पहले क्या करेंगे, जो अपना रेसिस्टेंस है ना, जो सेकेंडरी रेजिस्टेंस है ना, कैन यू शिफ्ट दिस वन टू द प्राइमरी साइड. जो अपना सेकेंडरी रेजिस्टेंस है ना, कैन यू शिफ्ट दिस वन टू द प्राइमरी साइड. और प्राइमरी साइड शिफ्ट किया तो देन व्हाट इज द रेजिस्टेंस विल बी एनिमेशन आर एल डैश. फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं इधर, N1 by N2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ करस्पॉन्डिंग लोड रेजिस्टेंस. देखो जी इधर लोड रेजिस्टेंस कितना है जी, कितना दिया इधर 1. डायरेक्टली आई एम राइटिंग दिस फॉर्मूला. देखिए क्वेश्चन में दे दिया टर्न्स रेशियो कितना है जी, प्राइमरी साइड इज 3, सेकेंडरी साइड इज 1. इधर रेजिस्टेंस वाला कितना है जी 1, सिंप्लीफाई करने से कितना आ गया इधर 9 ohms. ओके, थोड़ा कैलकुलेशन आसानी से करने के लिए पहले क्या करो, जो अपना सेकेंड रेजिस्टेंस है ना शिफ्टेड टुवर्ड द प्राइमरी साइड. ओके, बाद में क्या करो, चेक करो गिवन डेटा, चेक करो जी गिवन डेटा में ट्राई टू वेरीफाई वेर इट इज सैटिस्फाइंग द रेसिप्रोकल कंडीशन और नॉट. देखो जी जेड पैरामीटर्स के लिए रेसिप्रोकल कंडीशन क्या है इधर, Z12 इक्वल टू Z21. मान लो थोड़ी देर रेसिप्रोकली सैटिस्फाइंग. जब रेसिप्रोकल सैटिस्फाई हो रहा बोलो तो कैलकुलेशन थोड़ा आसानी से करने के लिए जो अपना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है ना, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इज रिप्लेस बाय इक्विवेलेंट टी नेटवर्क. जो अपना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है ना, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क रिप्लेस बाय इक्विवेलेंट टी नेटवर्क प्रोवाइडेड इट इज सैटिस्फाइंग द रेसिप्रोकल कंडीशन. मगर एग्जांपल में थोड़ा ध्यान से देखें तो रेसिप्रोकल कंडीशन नॉट सैटिस्फाइंग. देन व्हाट इज द अदर अप्रोच, then we can replace this entire complex network by Z parameters equivalent circuit. देखो जी can you develop the Z parameters equivalent circuit for this one? Can you develop the Z parameters? देखो जी can you develop the respective Z parameters equivalent circuit for this one?
देखो जी, एज पर द टू पोर्ट नेटवर्क कैन आई इंडिकेट लाइक दिस सर, कैन आई इंडिकेट लाइक दिस। आप चेक करो Z11 कितना दिया क्वेश्चन में, Z11 इक्वल 4। देखो जी Z12 एग्जाम्पल में Z12 कितना इधर 8I2। देखो जी Z21 कितना इधर करस्पॉन्ड, Z21 इज द 1, Z22 कितना इधर 3, इक्वल एडिशन कितना इधर 9। अब एक बार चेक कर लो जी, स्टेप चेक कर लो एक बार। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट सेम एक्सप्रेशंस ना। Okay. Now let us write the equations correspond to loop 1 and loop 2. Now let us see the equations correspond to loop 1 and the loop 2. देखो जी, corresponds example by KVL loop 1. If you write the KVL equation correspond to loop 1, देखो जी एग्जाम्पल में वोल्टेज कितना है 20। जो अपना I1 करंट है ना, I1 करंट सर्कुलेट्स इन दिस वन, व्हाट वी रेडिस इन 4I1। फिर कैसे लिख सकते हैं जी, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप। इक्वेशन 1 आ गया इधर। कम टू सेकंड इक्वेशन, देखो जी लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल वोल्टेज राइज V2। 3 ohms में करंट कितना जा रहा है जी, I2 करंट। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप। अब V2 चेक करेंगे। जो अपना I2 है ना, I2 is entering at the negative terminal. When the current enters negative terminal, sign for the current is taken as a negative. Can it the -9I1? क्यों बोलते हो, रेजिस्टेंस कितना है इधर 9, करंट किधर एंटर हुआ इधर, एंटरिंग एट द नेगेटिव टर्मिनल। वी राइट इसमें से -9I2 3I2 प्लस I1। कैन आई रिलीज दिस सर? देखो जी एज पर द गिवन डेटा, क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हो आपको, इज आस्किंग द पावर डिसिपेशन रेजिस्टेंस। व्हेन आई शिफ्ट दिस वन टू द प्राइमरी साइड, रेजिस्टेंस कितना आ गया 9 ohms। 9 ohms में करंट कितना जा रहा है इधर, I2 करंट। कैलकुलेशन करने से इधर I2 निकालना, इधर कैलकुलेशन करने से I2 निकालना इधर। देखो जी I2 निकालने के लिए कैन यू रीअरेंज दिस इक्वेशन। देखो जी रीअरेंज करके कैन राइट द दिस I1 वैल्यू, रीअरेंज करके कैन राइट द I1 वैल्यू इनटू ऑफ I2। चेक करो जी, रीअरेंज करो, राइट द I1 वैल्यू इनटू ऑफ I2। देन आफ्टर सब्स्टिट्यूट द I1 वैल्यू इन दिस इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट द I1 वैल्यू इन दिस इक्वेशन 1। पहले रीअरेंज करो जी, रीअरेंज करके सब्स्टिट्यूट करो। कैन यू फाइंड आउट द I2 करंट नाउ, डू इट, डू द कैलकुलेशंस, आई गिव ऑल द हिंट्स। अब चेक कर लो जी एक बार। आई होप यू आर गेटिंग ना। इधर रीअरेंज करते व्हाट यू गेट इसमें से -12I2 गिव नेम एज इक्वेशन 2। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस इक्वेशन 2, सब्स्टिट्यूट द इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। 24I1 क्या है इधर, I1 इक्वल टू रेट द -12I2 8I2। सिंप्लीफाई करके पहले I2 मैग्नीट्यूड निकालो जी, I2 निकालो। इधर I2 निकालने के बाद क्या चाहिए आपको, पावर डिसिपेशन लोड रेजिस्टर। इन इनपुट साइड लोड रेजिस्टेंस कितना इधर 9 ohms, इनपुट साइड लोड रेजिस्टेंस कितना इधर 9 ohms। दैट मींस कैन यू फाइंड आउट द करस्पॉन्डिंग पावर हियर, कैन फाइंड द करस्पॉन्डिंग पावर हाउ टू राइट इसमें से दिस I2 स्क्वायर इनटू मल्टीप्लाई द करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है इधर 9 ohms। Kushi Kumari saying the 2.25 watts. Abhishek Sharma also got same answer 2.25 watts. Shall I confirm this one? 2.25 watts. पहले क्या करो, इधर सिंप्लीफाई करके I2 निकालो। I2 निकालने के बाद सिंप्लीफाई करने से यू कैन फाइंड आउट द पावर, यू कैन फाइंड आउट द पावर।
Okay, 2.25. Pooja also got same answer. Very good, very good. Now read the next question. क्वेश्चन पढ़ो जी एक बार. All of read the question. 2.25 watts. Very good. Joy, Pooja, Meena. Very good. देखिए dear students, especially in the resonance topic and two-port network. Two-port network में try to remember all the standard equations correspond to Z parameters, Y parameters, hybrid parameters, ABCD parameters. Remember respect to standard equations and correspond Z parameters, Y parameters के लिए try to remember the standard formulas correspond to T network and pi network. If you remember that one, you can save the time in the exam. And in the resonance topic and two-port network, if you remember the relations, you can save the time in the exam. You have to apply your memory power to remember all these things. Otherwise, doing the derivation means it takes a little more time. Okay, chaliye. What is the requirement is in this example maximum power. Okay. What a condition for maximum power? RL equal to R Thevenin's. That means for given data, you have to find out the R Thevenin's value. R Thevenin's value. Chaliye. To find out this R Thevenin's, what is the general procedure is deactivate all the independent sources. It is our complex network. For this complex network, deactivate all the independent sources. That voltage source is replaced by short circuit. Now voltage is V1, current of this is I1. Okay, I am indicating directions as per our two-port network convention. Two-port network convention. Deactivate all the independent sources. And with respect to output terminals, give the name as the output terminals A and the B. With respect to output terminals, now you have to find out the R Thevenin's. Find out करने के लिए across the AB terminals, if I assume one source, मान लो source is V2 and the current of this is I2. देखिए क्या चाहिए आपको R Thevenin's with respect to AB points. With respect to this AB points here, that V by I ratio. That V2 by I2, that V2 by I2 ratio indicate the respect to equivalent resistance. V2 by I2 ratio indicate the equivalent resistance. अब check करेंगे. Now what are the given equations? Check करेंगे पहले. Correspond to this example. Now first come to the input side. In the input side तो ध्यान से check करो. Current is entering here plus, other end is a minus. Other end is a minus. देखो जी वोल्टेज अगर 10 ohms, वोल्टेज अगर V1 both are same, मगर polarities देखिए, we are getting as a minus and plus, but here you got plus minus. That means we can write this V1 is equal to minus 10 I1, minus 10 I1. क्यों बोलते polarities we got the minus plus, but here you got plus and the minus. दोनों के लिए voltage of this one, voltage magnitude तो same है, मगर polarities are the opposite. Polarities are the opposite. Now come to standard equations. Now if you come to standard equation for this V1 equal to, we write the A V2 minus B I2. Minus B I2. What about the other standard equation? We write this as I1 equal to C V2 minus D I2. Minus D I2. देखिए correspond to this example here. Correspond to this example. What is our requirement? Is the V2 by I2 ratio. Our required V2 by I2 ratio. If you want to find out V2 by I2 ratio, we have to eliminate the I1 value. You have to eliminate the I1 value. देखो जी correspond this example. देखो जी जो V1 है ना, V1 equal to, you write the minus 10 I1. Minus 10 I1. देखो जी A value कितना दिया इधर 4 V2, 4 V2. B value कितना इधर 20 I2. आप इधर रीअरेंज करके देखो जी इक्वेशन रीअरेंज करके I1 इक्वल टू पीरियड इसमें से minus 0.4 V2. Then what do you write इसमें से plus 2 I2. Can I write this? Give the name for this में से equation. Give the name for this equation 1. रीअरेंज करो जी. रीअरेंज करने से can I write this here? जो इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन 1 ले जाके इधर पुट कर सकते हैं इधर. नाउ वी कैन राइट इसमें 0.4 V2 प्लस 2 I2 इक्वल टू
CV2 इधर C वैल्यू कितना है इधर 0.1, C वैल्यू कितना है 0.1 V2. Now D वैल्यू कितना है इधर 2, D वैल्यू कितना है इधर 2I2. चेक करो जी, आई गिव ऑल हिंट्स, पूरा सिंप्लीफाई करो. सिंप्लीफाई करने से कैन फाइंड V2/I2 रेशियो. Try to rearrange this equation. Rearrange करने से can find V2/I2 ratio. Simplify it. Here we are not using any circuit. Robin Bunsell. Okay. For explanation purpose, I developed that one. Okay. Two interconnect networks, we have to identify connections, whether series connection, parallel connection or cascading connection. Anybody answer? V2/I2 8 ohms, Manoj and Roshan saying the 8 ohms. Oh, Abhishek Sharma got the 40/3. Vivek 8 ohms. Check karo 8 ohms. That V2/I2 indicates the RThevenin. But the condition for the maximum power, the condition for maximum power is RL equal to RThevenin. The condition for the maximum power is RL equal to RThevenin. 8 ohms. Read the next question. All of you read this question. Okay. Now correspond this example. For this example here, again if you develop the figure, input voltage V1 and input current is I1 and output have the resistance R value is unknown. Can I really this here? It is one complex network. As per given information with respect to input side, input impedance, that means V1/I1, as per given information, what is the input impedance how much here? 4 ohms. When input impedance is 4 ohms, now we have to find out the corresponding R value. In the data itself, some V1, V2 equations are given. अब चेक करेंगे how can you use the given data. Now for this example here, if you come to the output part, output part here, V2 equal to, when the current enters at negative terminal, sign for the current is taken as negative. V2 equal to minus I2R. आप चेक करेंगे in the data already V2 equation is given. V2 equal to what do you write this one? 16I1 plus 7I2. In place of V2, चेक करो जी, रीअरेंज करके कैन ऐड द I2 वैल्यू इंटू से 5 1, रीअरेंज करके कैन ऐड द I2 वैल्यू इंटू से 5 1, जो इक्वेशन आ गए इधर, गिव द नेम एज इक्वेशन 1.
Then corresponding input side we can write the V1 equal to 8I1 12I2. What is the requirement in the data itself? V1 by I1 ratio is given. Now to eliminate the I2 value, can you substitute this equation 1 in this give the name as equation 2? Substitute the equation 1 in equation 2. Do the substitution, simplify it. If you rearrange this entire equation, we can write this as this V1 by I1 R plus 7. Rearrange this equation, you get the V1 by I1. In the data itself given, what is V1 by I1 equal to how much here? 4. V1 by I1 equal to 4. Now simplify this entire expression. Simplify करके can you find out the R value? Simplify करके can you find the R value? Check it out. Unknown is the only R value. Give the answers. 41 ohms. Arpit Gupta. Arpit Gupta 41. Shall I confirm answers? R equal to many students are saying Kabir, Sakshi 41 ohms. Checkology. Okay, 41 Kabir, yes, 41 ohms. Now can you read this question? Okay. Vivek Kumar, all the students are saying positive, but आपको नेगेटिव वो कैसा आ रहा है? Abhishek Sharma, all the students are saying positive only. Now for this example here, what is the requirement of the ABCD parameters? For this ABCD parameters, can you first can write the respect to standard equations? What is standard equations are the V1 equal to A V2 minus B I2. It is one standard equation. But the one more standard equation is I1 equal to C V2 minus B I2. Then try to write the KCL and KVL equation for given network. Then after rearrange it as per our standard equation, as per standard equations. Now for this example here, first I am trying to write the KCL in the output part. By KCL. If I write the KCL in the output part, for this example, what is the node voltage for this V1? What is the node voltage for this V1? With respect to ground potential, what is the node voltage is V2? If I write the equation here, what is the I2 is the incoming current. I2 is incoming current. We write this as a V2 by 1 by S. Now plus similar properties subtraction. We can write this as a V2 minus V1. V2 minus V1 by 1. If you rearrange this equation, check karo ji, if you rearrange this entire equation,
फ्रॉम दिस वन आप रीअरेंज किया तो चेक करो, कैन बी सर V1 इक्वल टू what is the requirement, one of the equation V1 value in terms of V2 and I2, V1 value in terms of V2 and I2. आप इधर rearrange किया तो we can write this as a S plus 1 V2 and minus I2. अब चेक करो जी, can I compare the standard equation? Standard equation क्या इधर V1 equal to AV2 minus BI2. देखिए especially in the two port network, whenever they asked all the 4 parameters, पहले क्या करो, try to verify the options. Every time don't try to find out all the 4 parameters. According to options में आपके elimination process also. देखो जी, in this example में A equal कितना है इधर S plus 1. A equal to S plus 1, check करो which options are eliminated. Last one is incorrect and the second option also incorrect. Now A and C options. अब check करेंगे. Come to the B value. Now I2 quotient minus 1, but B quotient is a here minus B quotient. That means what do you write this one? B quotient is only 1. Here also negative signs are present, then what B quotient is 1. Now in the A option, what is given as a minus 1? What is given as a minus 1? That's why A is also incorrect. Then what is correct option? C. Especially in the two port network, if you go for the elimination process, we can save the time in the exam. Then if you want to verify the remaining other 2 parameters, try to write the KCL equation at the node 1. Simplify करो, simplify करने से we can find out the other 2 parameters. Okay, dear students, and remaining topics that are transients and theorem questions and as well magnetic coupled circuits. Some more questions will be discussed by Naresh sir. And whenever you are attempting any question exam, क्वेश्चन देखने के बाद पहले चेक कर लो कितना टाइम लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. If it is a lengthy question, don't try to attempt at the starting itself. And pay more attention, especially whenever you are doing the calculations. क्यों मतलब many students are doing the calculation mistakes, especially in the steady state AC circuits. Okay, dear students, wish you all the best. Okay, Naresh sir will discuss some more questions from other topics also. Okay, dear students, wish you all the best. Just wait for 2 minutes. Sir will continue. Wait for 2 minutes. Okay, dear students, wish you all the best. Thank you, Kiran sir. I am going to now discuss the problems based on the transients, theorems and magnetic coupled circuits. Are you ready now? Shall we start now? Okay. Right. So now the first question is, just read the problem carefully. Now give answers for this question now. The switch has been open for a long time
and it is closed at t is equal to 0. The current and rate of change of current in an inductor at t is equal to 0 plus is 3 amperes and minus 6 ampere per second. After switching, comma, is the capacitor reached the steady state and its value is 20 volts. The value of supply voltage, inductor value and rate of change of voltage at t is equal to 0 plus. So, give an answer for this question. Anyone? Come on. This is a totally is based on the initial and final values के ऊपर है. The question is, so first you solve this question, you can get the concepts of initial values, and initial means the behavior of inductor, resistance and capacitors as 0 plus and infinite. ये पूरा आता है इसमें से. So anyone? No response. So to start now, here is a Vs is now. What is the difference between the DC and here is now IU of t? Here a DC voltage started at minus infinity, but the current is starts at t is equal to 0. So t is equal to 0 minus is a find out the what is the inductor behavior and the capacitor behavior here now. So no one has given answer now up to now. So abhi देखेंगे now. So Vs is equal is not given, the DC is given to the inductor. The inductor is going to the short circuited. T is equal to 0 minus के बारे में बात कर रहा हूँ इधर इस. T is equal to 0 minus inductor with source को connect है, but capacitor is not connected to the source because of t is equal to 0 के टाइम पर एक क्लोज कर रहे. So inductor with source, so it acts as a short circuit and capacitor is initially directly लिख सकते Vc of 0 minus is equal to 0 volts. Why? Because this is without source. So what is the current is flowing to this one is given is a 3 amperes is given. So this 3 amperes. So what is the volt across here now? 3 amperes means just I will draw the diagram. It's a diagram. Here Vs t is equal to 0 minus में Vs 2 ohms and 4 ohms. Here the inductor is replaced by short circuit. Now here is a current source is replaced by open circuit and switch was open. So what is the current is flowing here now? 3 amperes. So Vs is equal to 2 plus 4 into 3. So Vs value आ गया 18 volts. Vs तो आ गया 18 volts. No one अभी तक तो कोई भी नहीं दिए. Vs is equal to 18 volts आ गया. Next is given information is the current to the inductor is minus 6 ampere per second. ये दिए ना, minus 6 ampere per second दिए. So minus 6 amperes per second means the volt across inductor you can find out from t is equal to 0 plus के time पर. So 0 minus 0 plus the current to the inductor is same or not? So IL of here is a now if you find out the t is equal to 0 plus, IL of 0 plus is equal to 3 amperes and is given information is dIL of 0 plus by dt is equal to minus 6 ampere per second. So now draw the your circuit diagram. Here Vs is we know the 18 volts
here 2 ohms, here the 4 ohms, inductor is replaced by current source in parallel with open circuit. And what about the current is? The current is, here is a I amperes. Now capacitor is replaced by short circuit. देख लो ये टोटल आ गया ना, t is equal 0 प्लस के टाइम पर व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर आ गया इसमें. So is the 2 ohms and 4 ohms. This current is 3 amperes. Now what is the VL of 0 plus? Why you find out the VL of 0 plus? I need Ti of 0 plus by dt. इसी के कारण you find out the VL of 0 plus. What a current is flowing here now? The current is flowing is here now 3 amperes only, because of inductor doesn't allow the sudden change of current. So this value will be 12 volts. Now apply KVL in this. इसमें से KVL अप्लाई करो आउटसाइड लूप से. So VL of 0 plus 12 volts is equal to 0. So VL of 0 plus is equal to minus 12 volts. So VL is equal to L into DIL of 0 plus by dt is equal to minus 12. So L value क्या हो सकता है? Here is DIL is minus 6 now. Here is, so L is into minus 6 is equal to minus 12. So L value becomes 2 Henry. L value तो आ गया 2 Henry. Now options में है क्या नहीं है देख लो. Here is 18 volts 2 Henry है, 18 volts and 2 Henry both are there. But what is the dVc of 0 plus by dt? 2 Henry तो आ गया. Next is और dVc of 0 plus by dt क्या हो सकता है? Anyone come on. कोई भी अभी तक नहीं दिए. So dVc of 0 plus by dt is given information क्या दिए? Here is the final voltage after switching के बाद the volt across capacitor is given 20 volts. Why it is the need of this 20 volts? एक current होना चाहिए. Without this current you can't get a dVc of 0 plus by dt. How to get dVc of 0 plus dt? From IC of 0 plus, that is C dVc of 0 plus by dt. So our interest is you find out IC of 0 plus. But IC of 0 plus के लिए here is your IC of 0 plus होना चाहिए. इसमें IC of 0 plus के लिए I होना चाहिए. I कैसे आते हैं? Is given information at t tends to infinite volt across capacitor is 20 volts दिए. So now if you are draw the circuit diagram at t tends to infinite, देख लो 0 के टाइम पर, 0 माइनस के टाइम पर बड़ा बिहेवियर आ गया, 0 प्लस के टाइम पर आ गया एंड इन्फिनिट के टाइम पर भी आ गया. सो टी टेंड्स टू इन्फिनिट में क्या है? इंडक्टर इज कनेक्टेड विद सोर्स है, विद सोर्स है. कैपेसिटर आल्सो कनेक्टेड विद सोर्स. विद सोर्स में क्या हो सकता है? विद सोर्स इंडक्टर एक्ट्स एज ए शॉर्ट सर्क्यूट, कैपेसिटर एक्ट्स एज ए ओपन सर्क्यूट. सिंपली नाउ 18 volts, here 2 ohms, here 4 ohms, and inductor is replaced by short circuit. Current is, don't know the current value is I, but here the capacitor will be open circuited. This voltage is given as 20 volts. So now here also 20 volts. Now apply KCL. Apply karo KCL. So here is a 20 minus outgoing, this is outgoing, this is incoming. So 20 minus 18 by 2 is outgoing plus 20 by 4 is outgoing, I is incoming. So here is a 20 aside 2 by 1 plus here 5 is equal to I. So I is equal to आ गया 6 amperes. This current is 6 amperes आ गया. I is equal to 6 amperes now. This I value is 6 amperes. So now in this here is apply 6 amperes. Now
What is the current is flowing here now? What is the voltage here now? 0 volts. Why? Because here short circuited, here 0 volts. The current will be how much? 18 minus 0 by 2, that is 6 amperes. No, that is 9 amperes. 18 minus 0 by 2, 9 amperes. 9 amperes coming, 3 amperes chale gaye. How much current is here now? 6 amperes. 6 plus 6 is, how much the current is? 12 amperes. IC of 0 plus at t is equal to 0 plus the current to the capacitor is 12 amperes. Now here is 12 amperes. IC of 0 plus is equal to 12 amperes. C dVc of 0 plus by dt is equal to 12. So dVc of 0 plus by dt is equal to 12 by C. C value is how much is given? 1 by 4. So the value will becomes 48 volts per second. So option में आप देख सकते हैं now which one is the correct option is here. The option is here B is the correct answer. So only Joy has given a correct answer B. So Vivek Kumar is only given as a 218 volts but is not given as a dVc of 0 plus by dt. Okay, ये प्रॉब्लम से आपको कॉन्सेप्ट आ गया. 0 माइनस के टाइम पर व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, 0 प्लस के टाइम पर हाउ टू रिप्लेस इंडक्टर एंड कैपेसिटर, एंड इन्फिनिट के टाइम पर भी व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर. एक प्रॉब्लम के if you are do this one you get all these concepts. Okay, is it clear now? Is it clear now? No response. Come on Abhishek, Vivek Kumar, Joy, Abhishek Sharma, Shivpal Singh. Option B is correct. Yes, Abhishek Sharma. Okay, shall I move to this second question? Yes, okay, right. Something is interesting here now. So what is the behavior of inductor देखेंगे now. So एक पढ़ लो here is now. Just you read the question fast. So time 2 मिनट के अंदर आंसर देना है. Come on, Vishnash. So what is the question is here now? The circuit of figure in a period t operates in 2 phases. In the first phase, switch S1 is closed, S2 is open. Second phase में reverse. S1 is now second phase में क्या है? S2 is closed, S1 is open. Given the current through the inductor, the energy dissipated in each period, Vs value, this is a Vs value here now, here is the grounded here now, here to here. Vs value is given as 2 volts and T1 is equal to 2 seconds. Anyone? Come on. Vishnash, Abhishek Sharma, Joy, come on, Joy, Vivek Kumar, the options are 4 joules, 2 joules, 6 joules and 0.5 joules. Come on, study point 92. ओके, अभी तक 2 मिनट तो हो गया. राइट.
नाउ फर्स्ट में क्या है, S1 क्लोज है, S1 is closed, S2 is open. Now the supply is connected. Now 2 volts is connected to the inductor. Inductor connected है. This is the connected. So whenever the voltage is connected to the inductor, what is the current flowing to the inductor is? The current is flowing to the inductor is IL of t is equal to 1 by L integration, here is 0 to t VL of t dt. Okay, it is not going to the short circuit. ये समझ में आना चाहिए. Maybe studied DC supply is given to the inductor, it acts as a short circuit in steady state, but here नहीं हो सकता है. Here is a resistance is not there, so resistance नहीं है. So tau is equal to L by R is equal to, here is a 0, so time constant is infinite. So infinite के time पर inductor is not going to the short circuit. So how the current will flows? The current will be flows through the inductor is 1 by L 0 to VL of t dt. अच्छा है, अभिषेक शर्मा, अभिषेक दिए करेक्ट आंसर. So here is, पहले देख लो, here is why here is given now this now ramp. Why? Because the inductor is now is charging. What the charging is here now? IL of t is equal to 1 by L. L वैल्यू पता नहीं है, but 0 to here T1 तक देख लो, T1 तक is charging, T1 के बाद is discharging, is exponentially discharging. Why? Because T1 के बाद the switch S1 is opened, S2 is closed, so the circuit becomes here now source free circuit. So inductor is loses its energy through the resistance, so that's why current will be decreasing exponentially. So इसमें चार्जिंग के टाइम पर how much is energy stored, it will be dissipate through the resistance. इसीलिए how much energy stored by the inductor from 0 to t1 seconds देखेंगे. So how much current is flowing to the inductor up to t1 is equal to 2 seconds. Okay, so अभी देखेंगे now. So here is 0 to 2 seconds ले रहा हूं. VL is equal to how much here now? Voltage is given is 2 volts. Volt across inductor and supply voltage both are same. That is a 2 dt. So now IL of t is equal to, if you write IL of t is equal to 1 by L into 2t from 0 to 2 seconds. 2 का integration is 2t. So now IL of t value क्या है? There is at t is equal to 2 seconds. T1 is equal to 2 seconds के time पर what the now value is 2 amperes. So write down 2 amperes is equal to 1 by L into 2t. This is how much here now? This value is 4 or not. Substitute 2 and 0. So now L is equal to, how much the value is? L is equal to, from this L value will be 2 Henry आ गया. From this you get a L value. Once you get a L value, how much energy stored by the inductor is WL is equal to half into L into I square. I square value क्या है? 2 amperes. 2 amperes. 2 to get cancelled. The answer is 4 joules. So only one. I level concept नहीं है पूजा माजी. पूजा माजी is I level concept नहीं है. This is already इंडक्टर का बिहेवियर पता होना चाहिए. मेरा रेसिस्टेंस नहीं है, एट द टाइम क्या हो सकता है. सो ये है इंडक्टर विल बी, ये बोल सकते अनस्टेबल सर्किट बोल सकते. इंडक्टर, ओनली इंडक्टर, आइडियल वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड टू द आइडियल इंडक्टर. द करंट टू द इंडक्टर इज एक्सपोनेंशियल इंक्रीज नहीं होता है. रैंप मींस डायरेक्टली इज अ स्ट्रेट लाइन जाते हैं. ओके, ये होना चाहिए. सो पहले चार्जिंग, discharging, charging, discharging. How much here is the energy stored? That is a 4 joules. समझ में आया ना? So something is, आप पढ़े थे मे बी आरएल सर्किट पढ़े थे ना, इसमें ओनली इंडक्टर एंड रेसिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूं यार.
Any doubt here now? A nahi hai. Answer is A is correct answer. Correct. A is answer. Joy and Anibhan also given a correct answer. Abhishek also given a correct answer. Okay. Is it clear now? So this is now simple formula. Current to the inductor. From that you get the value of inductor and of Li square formula use karo, you get a answer now. Okay. So now move to the third question. It's a very simple question now. Very simple question. Directly बोल सकते. Very simple. अभी बोल सकते. Now the question is, if the switch is closed at t is equal to 0, the current I of t for t greater than 0 will be, options भी दिए थे, a decreasing exponentially, a increasing exponentially, oscillatory and constant. Come on. Anyone? Again the behavior of inductor, t is equal to 0 minus. So t is equal to 0 minus, what the behavior is? Right? आ गया. C is answer. C oscillatory. देख लो, ये इस ऑसिलेटरी के लिए याद रखना है, ऑसिलेटर के लिए पक्का क्या होना चाहिए, इंडक्टर एंड कैपेसिटर है तो ऑसिलेटरी नेचर रहते हैं, इंडक्टर कैपेसिटर, बट ओनली इंडक्टर इज हियर नाउ. ओके, ये इज आंसर. ओ राइट, देखेंगे नाउ. राइट. सो नाउ t इज इक्वल टू 0 माइनस, t इज इक्वल टू 0 माइनस में व्हाट इज द बिहेवियर इज हियर नाउ. t इज इक्वल टू 0 माइनस में क्या बिहेवियर है इधर इज, सो इंडक्टर इज कनेक्ट टू द सोर्स 0 माइनस में, सो इंडक्टर एक्ट्स इज ए शॉर्ट सर्क्यूट और नॉट, L with source. So it is a now short circuited. Now what the current is, IL of 0 minus value is how much, that is 20 volts. Now resistance 4K, inductor is now replaced by short circuit, remaining is not connected to the source, इसलिए इसका लेने की जरूरत नहीं है. Now what is the now 4 kilo ohms, IL of 0 minus is equal to 20 by 4K, this value becomes 5 milliamperes. आ गया. Now if you want, suppose a single order first order circuit है, इसमें क्या यूज कर सकते हैं रेस्पॉन्स के लिए, that is the final value plus initial value minus final value to e power minus t by tau यूज कर सकते. But once t is equal to 0 होने के बाद देख लो, here is the switch is closed now, so what is the now 20 volts, here is a resistance, इंडक्टर देख लो, here is इंडक्टर इस फाइनल वैल्यू में देख लो, t टेंड्स टू इनफिनिट में भी देख लो, t टेंड्स टू इनफिनिट में भी देख लो, here is शॉर्ट सर्क्यूटेड, t टेंड्स टू इनफिनिट में भी इंडक्टर विथ now here is now 2 kilo ohms and some k into Ix of t. So this is now 2 kilo ohms. देख लो, here is now here 4 kilo ohms. What is the current is here now, I of t is always flowing in this or not. The current is final value also a, how much final value also a,
IL of infinite is equal to 5 milliamperes or not? So Ix value is how much here now? Ix value will be 0 amperes or not? Why? Because the current only flows in this. No current will flows here. So Ix value is 0 amperes. इसीलिए this is open circuited, no current is flowing here. Now I of t value is always 5 milliamperes रहते हैं. Is it clear now? So this is not a decreasing, it is not a source free circuit. When it is, when the circuit will be, response will be decreasing if it is a source free circuit, but it is a source free circuit nahi hai, and Ix value is becomes a 0 amperes. That's why the answer is a constant. The answer क्या है? It is a constant है. It is not oscillatory. Oscillator के लिए कैपेसिटर होना चाहिए. A decreasing के लिए source भी नहीं है. Source भी तो नहीं है. Next is increasing exponentially. It is not a charging. Already charge हो गया. इसलिए 0 प्लस में 5 मिली एम्पियर से, इन्फिनिट में भी 5 मिली एम्पियर से, इसीलिए द नेचर ऑफ द I of t is constant. Okay, so the answer is here now, it is a constant, it is not a decreasing now here is. Okay, now move to the next question. So in the given circuit, switch is closed at t is equal to 0. Which of the following statements are correct? Something is interesting question. This is t is equal to 0 plus the voltage V naught is 3 volts. T tends to infinite, the volt across C2 is 4 volts. And t is equal to 0 plus the volt across C1 is 4 volts. At t is equal to 10 microseconds, the voltage V naught is 3.4 volts. So now okay, Abhishek Sharma, come on. Now first step is and two capacitors are there. So in place of, even though this is a first order circuit, I am not using a normally the formula. Formula क्या है? Final value plus initial value minus final value into e power minus t by tau. So in place of formula, Laplace भी use कर सकते. Two capacitors are there. Something is difficult, you are using the formula. इसीलिए I am using a Laplace transform technique. So my the hint दिए Laplace transform technique use करो. It give answer now. So take a 2 minutes का time दे दो. So time के अंदर आंसर देना है. Come on, come on. अभिषेक TS, अभिषेक शर्मा, जॉय, पूजा, विवेक कुमार, गुप्ता, वंशी कृष्णा. Anyone? So डायरेक्टली तो बोल सकते हैं. So t is equal to 0 माइनस में, t is equal to 0 माइनस में, Vc1 of 0 माइनस is क्या हो सकता है? Vc1 of 0 minus is, Vc1 of 0 minus is 0 or not? 0 volts, because of source से connection नहीं है. T is equal to 0 minus में. Yes. Vc2 of 0 minus क्या हो गया? Vc2 of 0 minus is also 0 volts. तो मालूम हो गया ना? Yes or no? Right? Now apply Laplace transform. Apply Laplace transform.
I am taking now here is a C1 and C2 both are same one. C1 value and C2 values both are same है, इसके कारण now I am using a now here is ये 1 by CS लिखता हूं, ये भी 1 by CS लिखता हूं, बाद में I will substitute C value. ये भी रेसिस्टेंस है, ये भी रेसिस्टेंस है, both are रेसिस्टेंस है. What is the now Laplace transform यूज करो, this value becomes 4 is 4 by S, it's 1 by CS and 1 by CS. ए भी R R है ना, ए R है, ए भी R है, हो गया. I want this V output. Anyone? If both the values of currents yes, yes Joy, V naught is equal to क्या लिख सकते हैं भाई. Suppose I am taking this now I1, this is I2. Here entering plus leaving is minus, entering plus leaving is minus. I can write V naught is equal to VR plus VC2 R naught. VC2 plus VR is a V naught R naught. What the VC2 is? VC2 is equal to I1 into 1 by CS. Yes, I1 into 1 by CS. And VR is equal to I2 into R. बस I1 find करो, I2 find करो, get an answer now. Anyone? Come on. Option A क्या? इसमें ABC में this is now MS की question. Which of the following statements are correct? Okay, is it clear now? Now I draw the now I1 is equal to मैं लूप इक्वेशन लिखता हूं I1 के लिए एंड I2 के लिए डायरेक्टली यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड यूज करके लूप 1 लिखता हूं, लूप 2 का इक्वेशन लिखता हूं डायरेक्टली, राइट. लूप 1 में दिस इज नाउ टोटल हाउ मेनी हियर नाउ टोटल करंट इज हियर नाउ I1 of S into 1 by CS plus 1 by CS. So directly 2 by CS. Is it clear now? So sum of the impedance in a first loop 1 by CS plus 1 by CS. ये तो I1 आ गया. I1 I2 के बीच में एक लूप के बीच में एक है ना, here is a minus I2 into 1 by CS is equal to 4 by S. This is a loop 1. So after simplification, here is I1 2 I1 of S, I1 of S into 2 by CS minus SS गेट कैंसिल कर सकते हैं ना, सो डायरेक्ट लिखता हूं 2 I1 of S, 2 I1 minus I2 is equal to 4C, equation 1. Okay, is it clear now? Second equation is, सेकंड इक्वेशन देख लो, एस गेट कैंसल हो गया, सी गोइंग टू दैट साइड. सेकंड इक्वेशन में हियर इज अ नो सोर्स आर आर 2R प्लस 2R प्लस 1 बाई सी एस इंटू I2 ऑफ एस माइनस 1 बाई सी एस इंटू I1. करेक्ट और नॉट चेक करो. इसमें देख लो sum of the impedance in a second loop R plus 1 by CS, 2R plus 1 by CS. हो गया ना. Next is between the two loops कैपेसिटर है 1 by CS. So देख लो ये रेस ये आ गया is equal to 0. So 2RCS plus 1 by CS into I2 is equal to I1 by CS. CS get cancel. इसमें आ गया I1 is equal to 2RCS plus 1 into I2 आ गया.
सो इक्वेशन 2 हो गया. सो बोलो अभी, प्लीज गिव आंसर फास्ट. सब्स्टिट्यूट 2 in 1. Substitute 2 in 1. So 2I1 is equal to 2 into I1 is, how much I1 value is 2 RCS plus 1 into I2. Next is minus I2 is equal to 4C. So now I2 common karo, then you get a now 2 into 2 is 4 RCS plus 2 into 1 is 2 and ये minus 1 आ गया is equal to 4C. I2 is equal to 4C by 4 RCS plus 1. ये I2 आ गया, I2 आ गया, I1 आ गया. Then you can find out VR and VC. बोलो, फाइंड आउट करके बोल दीजिए V नॉट वैल्यू. फास्ट. सो I1 इज इक्वल टू बी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसमें से. यू गेट नाउ I1 वैल्यू. So now VC1, VC2 is equal to I1 into 1 by CS. Yes or no? I1 value is, you can substitute 2 RC plus 1 into, what I know here is I2 or not? I2 value substitute karo 4C by 4 RCS plus 1 into 1 by CS. This is a VC2. A simplify karo. Then VR is equal to I2 into R or not. That is I2 value will be 4C by 4 RCS plus 1 into R. ये VR है. Just substitute and apply inverse Laplace transform. You get a VC2 of t is equal to the 4 minus 2 e power minus t by 4 RC will get. This is a VC2 of t, and VR is equal to VR of t is equal to, I think, e power minus t by 4 RC will get. So now V output is equal to, both are plus karo, so 4 minus e power minus t by 4 RC. This is a V output. So now R value is equal to 5 kilo ohms and C value is 1 nanofarad. So V output is equal to 4 minus e power minus t by 4 into 5 kilo into 1 nano. So this value becomes V output of t is equal to 4 minus e power 20 means 0.05 into 10 to the power of minus 10 to the power of 6 into t. This is the expression for V output. Okay. Yes. No. Here is a V output आ गया is 4 minus, check it, ये V output है. So don't say here is, most of the members are do the mistake. VC1 of 0 minus is 0 volts, VC2 0 minus is 0 volt, but VC1 of 0 plus is not equal to 0 volts here now. Why? Because if you take a VC1 of 0 plus equal to 0 volts, VC2 of 0 plus equal to 0 volts, it violates the KVL. This is a special case. इसीलिए you are using here is a Laplace transform technique use किए थे.
ओके। सो ये V आउटपुट है, ये Vc2 है। नाउ सब्स्टिट्यूट देख लो, यार इस Vc2 ऑफ 0 प्लस क्या हो सकता है, Vc2 ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट यार नाउ 4 minus 2 e power 0, this value becomes 2 volts. Vc2 of 0 minus is 0 volts, but Vc2 of 0 plus is here now 2 volts. Next is V output of 0 plus क्या हो सकता है, V output of 0 plus will be. So what now is given, T is equal to 0 plus, the voltage V naught is 3 volts or not, check it, V naught is 3 volts or not. Here is V naught of 0 plus 4 minus e power 0, 4 minus 1 is, here is a 3. So V naught of 0 plus is equal to, here no doubt, V naught of 0 plus is equal to 4 minus e power 0, 3 volts is correct. V naught of 0 plus 1 is, next is Vc2 of 0 plus is equal to how much here now, the 2 volts. So if you are draw the now, here 4 volts, here capacitors are now, इधर तो 2 वोल्ट्स आ गया, ये रेसिस्टेंस है, ए भी रेसिस्टेंस है, ए 5 किलो, ए 5 किलो है, ये 2 वोल्ट्स है। इफ अप्लाई केवीएल, व्हाट इज अ Vc1 ऑफ 0 प्लस क्या हो सकता है, सो Vc1 ऑफ 0 प्लस मस्ट बी इक्वल क्या होना चाहिए, 2 वोल्ट्स होना चाहिए, देन ओनली इट ओबेज द केवीएल। Vc1 ऑफ 0 प्लस इज 2 वोल्ट्स, Vc1 of 0 minus is 0 volts, Vc1 of 0 plus is 2 volts है। So अभी चेक करो now, here is now what are the options, option पे देख लो, here is T is equal to 0 plus, volt across V naught is 3 volts is correct, T tends to infinite, the volt across C2 is 4 volts, yes, why, because here is now 4 minus e power minus t by 4 RC is there, e power minus infinity is 0, Vc2 of infinite is equal to 4 volts, yes. T is equal to 0 plus the volt across C1 is 4 volts, no, और C1 of 0 plus क्या आ गया, 2 volts आ गया। At T is equal to 10 microseconds, the voltage V naught is 3.4 volts, just substitute here now, इसमें substitute करो, V naught of T में substitute करो, so now it will get V naught of T is equal to 4 minus e power minus 0.05 into 10 to the power of 6 into T, a T place में substitute 10 microseconds, now we'll get 3 point something 4 volts, nearly equal to 3.4 volts आते हैं। So इसके concept के ऊपर क्या है, so one is इसमें capacitor का behavior is different, two capacitor connected in a series with the voltage source, at the time the Vc1 of 0 plus not equal to Vc1 of 0 minus होता है। so ये concept के लिए ये problem लिए थे, okay। so options क्या क्या correct है, A, B and D are the correct options, okay। so Laplace use करो, very simple से कर सकते हैं, some lengthy calculations है, but only concept purpose we did the problem, ये problem लिए थे, okay, right, ABD correct, Vamsi Krishna, ABD options are correct। now next question is, so ये भी थोड़ा lengthy है, but from this you get the concept of how to replace inductor and how to replace capacitor। so whenever t greater than 0 के टाइम पर ये याद रखना है, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते, बट सेकंड ऑर्डर के लिए पक्का यू टू गो फॉर दी लाप्लेस ट्रांसफॉर्म टेक्निक। व्हेन यू टू से सेकंड ऑर्डर सिस्टम और सेकंड ऑर्डर सर्किट, इफ इट कंसिस्ट ऑफ रेसिस्ट इंडक्टर एंड कैपेसिटर प्रेजेंट इन द नेटवर्क, ये ऑलवेज सेकंड ऑर्डर होता है, इसलिए इधर इंडक्टर है इधर कैपेसिटर है, ये पक्का सेकंड ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर में टाइप ऑफ रेस्पॉन्स तो पता है ना, सो दैट इज अ अंडर डैम्प्ड हो सकता है, क्रिटिकली डैम्प्ड हो सकता है, ओवर डैम्प्ड हो सकता है, अनडैम्प्ड भी हो सकता है। सो फ्रॉम दिस यू कैन फाइंड आउट द करंट IL ऑफ टी। सो ये भी थोड़ा लेंथी है, बट माई जस्ट आई विल गिव दी हाउ टू इंडिकेट दी, हाउ टू रिप्रेजेंट inductor and capacitor at t greater than 0, okay। देख लो, here is in a given circuit the switch has been at position A,
एक नंबर है. For a long time and it is moved to position B at t is equal to 0. The current through an inductor IL of t for t greater than 0 क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? So from here is पहले ड्रा करो फास्ट. ऑप्शंस बेस्ड ऑन द ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं यह प्रॉब्लम. व्हाट टी इज इक्वल 0 माइनस, पहले सर्किट तो ड्रा करो. टी इज इक्वल 0 माइनस में इंडक्टर इज कनेक्टेड टू द सोर्स, कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द सोर्स. सो इंडक्टर इज एक्ट ए शॉर्ट सर्किट, कैपेसिटर एक्ट ए ओपन सर्किट. सो ड्रा द नाउ सर्किट डायग्राम. सो ये देख लो, ये शॉर्ट सर्किट हो गया. नाउ हियर इज अ ओपन सर्किट हो गया. हाउ द करंट इज फ्लोइंग? द करंट इज 1 वोल्ट, शॉर्ट सर्किट एंड रेजिस्टेंस. सो टी इज इक्वल 0 माइनस में व्हाट इज द R1 वैल्यू दिए? दैट इज 0.5. सो IL1 of 0 minus is equal to 1 volt by 0.5 resistance. The current is flowing is 2 amperes. So T is equal to 0 minus ये 2 amperes है. Good evening Ashish Kumar. 2 amperes. And what about VC 0 minus is no current is flowing here now, 0 amperes. So what about here is a VC 0 minus is equal to डायरेक्टली बोल सकते हैं ना 1 volt or not. Here 0.5 into 2 that is 1 volt. ये तो आ गया, इनिशियल कंडीशंस आ गए. ओके, सो नेक्स्ट इज find out. Now draw this is most important. Now draw the circuit diagram t greater than 0. Why you are going the Laplace? Because of inductor and capacitor are there. So now using a so t greater than 0. Now switch is moving to the B position. ये हो गया. Inductor is replaced by voltage source in series with inductor. Voltage source value is L into I naught. This is Ls, and the resistance here, resistance. Capacitor is replaced by voltage source in series with capacitor. This is most important. ये होने के बाद only mathematics only. So this is a V naught by S. How much value? V naught by S means 1 by S. ये 1 by CS. कैपेसिटर वैल्यू क्या है? 1 फैराड. ये 1 by S ओम्स हो गया. इसे 0.5 ओम्स हो गया. ये 0.5 ओम्स हो गया. So this is L into I naught. L वैल्यू क्या है? 0.25. देख लो एक बार. L value is 0.25 into I naught 2. So that is 0.25 into 2 is how much? And these are now 5 volts. Ls 0.25 S. Our interest is क्या है? IL of S होना चाहिए. ये IL of S होना चाहिए. So normally loop analysis यूज कर सकते हैं, nodal analysis यूज कर सकते हैं, but I am not using a nodal analysis or loop analysis because of it will take a more and more time. In place of that, I am using a theorem, that is a Thevenin's theorem यूज करता हूँ. Our interest is now IL of S find out करने के लिए just I remove this branch. ये remove करता हूँ. So remove करो. Now the circuit becomes V naught means 1 by S by 1 by S. ये आ गया VTH यूज करो. ये VTH है 0.5. What is the value of VTH? VTH is equal to this voltage is 1 by S into voltage given rule is 0.5 by total how many impedance are now 0.5 plus 0.5 plus 1 by S. Okay, now VTH value becomes 0.5 by S get cancelled. 0.5 is 1, that is S plus 1. ये आ गया VTH. What about RTH? Looking from here now. RTH के लिए देख लो here is so ये short circuit है. These two are now
A, these two are in series and parallel or not. So RTH is equal to 0.5 plus 1 by S parallel with 0.5. So now this value becomes, here is 0.5 S plus 1 by S into 0.5 by 0.5 S plus 1 by S plus 0.5. This is RTH. Okay. So yes, LCM करो 0.5s 0.5s is now s हो गया and ये तो s get cancelled. So लिख दीजिए RTH फास्ट आंसर दीजिए. Come on. Yes, A भी कर सकते. KRU inductor will also replace the current source in parallel with inductor B. करंट सोर्स भी कर सकते, जस्ट अप्लाई सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट अ प्रॉब्लम, कर सकते, ए भी कर सकते. ओके, ए भी कर सकते. नॉर्मली दिस इज अ वेरी सिंपल से. सो इफ यू आर रिप्लेस्ड विद ए करंट सोर्स ए टाइम पर, इफ यू वांट IL इज इक्वल टू इनिशियल करंट प्लस आफ्टर t0 भी लेना पड़ता है. इससे इफ यू टेक दिस वन डायरेक्टली IL ऑफ S डायरेक्टली आते हैं, ये भी कर सकते, नॉट अ प्रॉब्लम. राइट, अमच खुशी कुमार, दिस वैल्यू इज 0.5 S plus 1 into 0.5 divided by 0.5 S 0.5 S S plus 1 or not, बस सिंपली एस गेट कैंसर. ये आ गया RTH. नाउ ये होने के बाद नाउ देख लो 0.5 S plus 1. नाउ ये होने के बाद नाउ द सर्क्यूट बिकम्स, देख लो हियर इज नाउ RTH, दिस इज VTH. VTH इज इक्वल टू कितना गया, VTH वैल्यू विल बी 0.5 by S plus 1, 0.5 by S plus 1. This value is 0.5 S by how much, 0.5 S plus 1 into 0.5 by S plus 1. Now connect removed branch R. What is the removed branch is here now? Here minus plus inductor. ये है द करंट डायरेक्शन कैसे होना चाहिए, ये डायरेक्शन होना चाहिए. ऑलरेडी मेंशन्ड IL of S is current doesn't change, direction doesn't change. 0.25 S and this is L into I0 value is 2, this is a 0.5. So now IL of S is equal to, directly you can write 0.5 minus 0.5 by S plus 1 upon 0.25 S plus 0.5 into 0.5 S plus 1 by S plus 1. So get a now IL of T. IL of S I think you get after simplification. Check करो, S square plus 2S plus 2. check करो fast. Okay. So this is now 2S by S square plus 2S plus 2 आते. Already IL of T. So this is now the roots are complex conjugate. So that time how to write this? IL of S is equal to 2S by A plus B whole square plus omega or not. So S plus 1 whole square plus 1 r naught. ऐसे लिख सकते हैं, S square plus 2S plus 1 है plus 1, ये 1 square है. So now IL of S becomes now 2 into S plus 1 minus 1, ये तो पता है ना, S plus 1 whole square plus 1. So IL of S is equal to 2 into S plus 1 by S plus 1 whole square plus 1 minus 1 by
s plus 1 whole square plus 1. What is inverse Laplace transform is IL of t is equal to 2 into, here is s plus 1 by s plus 1 whole square plus 1 means e power minus t cos t minus e power minus t sin t. So now IL of t is equal to, take a 2 e power minus t cos t minus sin t. So from this question से क्या क्या concepts आ गया? How to replace inductor with initial conditions, how to replace capacitor with initial conditions, and how to use Laplace transform. So but lengthy calculations are there, but इसमें से concepts क्या क्या आ गया? ये Laplace transform में भी how to use Laplace transform, now inverse Laplace transform का भी आ गया. If the complex roots are present in the equation, so how to write a here is a equation a plus b whole square plus omega square कैसे लिखना है, right? आ गया, ये चेक कर सकते हैं. सो फ्रॉम दिस एलिमिनेशन प्रोसेस पे भी कर सकते हैं. इज इट क्लियर नाउ? नाउ देख लो यार, एलिमिनेशन प्रोसेस में IL ऑफ 0 माइनस क्या आ गया? 2 amperes. IL ऑफ 0 प्लस भी 2 amperes होना चाहिए. यस और नो? इंडक्टर डजंट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट है, इसलिए IL ऑफ 0 प्लस आल्सो ये 2 amperes होना चाहिए. सो इसीलिए देख लो यार, इस फ्रॉम दिस इसमें देख लो यार, इस इफ सब्स्टिट्यूट t इज इक्वल टू 0, ये 0 हो गया, ये माइनस 1 हो गया, ये 1 हो गया. सो 2 माइनस 1, सो माइनस 1, 0 माइनस 1 इज माइनस 1, सो इसका वैल्यू आ गया माइनस 2 amperes आ गया. सो ये नहीं हो सकता है, पक्का पक्का. नेक्स्ट इज ये साइन टी 0 है, माइनस 1 है, ये 1 है, ये नहीं हो सकता है. सो इसमें देख लो, ये 0 है प्लस 1 है, सो ये 1 है, ये 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है. सो ये दो ऑप्शंस में आपको आंसर रहते हैं. ये दो ऑप्शंस में कैसे चेक करना है? ऑलवेज यू लुक फॉर दी t इज इक्वल 0 माइनस 0 प्लस में सेम होना चाहिए. सो बेस्ड ऑन द एलिमिनेशन प्रोसेस ऑल्सो ये भी आप एलिमिनेट कर सकते. आंसर इज बिटवीन द c एंड d के बीच में रहते हैं. सो बेस्ड ऑन द इंडक्टर डजंट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट. ओके, इज इट क्लियर नाउ? यस. इसमें थेवेनिन्स थ्योरम भी कैसे यूज करना है? इफ यू आर इन प्लेस ऑफ सपोज थेवेनिन्स थ्योरम यू आर यूजिंग इज नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस, इट विल टेक ए मोर एंड मोर टाइम. इसीलिए ये थ्योरम्स कैसे यूज करना है इन ट्रांजिएंट एनालिसिस में, ये भी एक कॉन्सेप्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन. नाउ सिंपल क्वेश्चन. नाउ सो रेगुलर क्वेश्चन नॉर्मली पूछते हैं. थेवेनिन्स थ्योरम विथ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्स आर प्रेजेंट इन द नेटवर्क, इसका आंसर दीजिए फास्ट. ये तो पक्का. सो प्रीवियस केस में तो थोड़ा लेंथी हो गया, बट ये डायरेक्टली बोल सकते हैं इसका आंसर्स. ना बोल दीजिए ना, कमान. खुशी कुमारी, जॉय, अभिषेक टीएस, अभिषेक शर्मा, कमांड. गिव आंसर नाउ फास्ट. द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बिटवीन AB terms of the given circuit is, so its circuits consist of both dependent and independent sources are there. Mud. Anyone?
नो रेस्पॉन्स. नाउ VTH फाइंड करेंगे. What about VTH? The first one is how to simplify it. First is any element in parallel with ideal voltage source. A ideal voltage source है, dependent source है, but ideal है. इन पैरेलल में कोई एलिमेंट है, पैरेलल में है. सो 2 ohms को डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं or not? Maybe you studied your plus or minus V and resistance R. It can be replaced by voltage source or not? It is a redundant or not? इसलिए 2 ohms को डायरेक्टली नेग्लेक्ट कर सकते हैं. डायरेक्टली यू कैन डायरेक्टली नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं. An element in parallel with any ideal voltage source, it is redundant. अभी देख लो between, अभी I am using a nodal analysis. Our intention is to find out the volt across 6 ohms. Why? Because the current for the 2 ohms is 0 amperes. Now between these two I am using a nodal analysis. Between 2 nodes ideal voltage source is present, that's the super node. So here is a Vx, a VTH. Apply KCL for both nodes at a time. This is now super node. Super node. Okay. Now apply KCL for both nodes at a time. Anyone? No one has given answer now. अभी तक तो कोई भी नहीं दिए. So Vx 10 ampere is incoming current. I'm writing now here is 10 ampere is incoming current, outgoing current and outgoing current. So 10 is equal to Vx by 4 outgoing and VTH by 6 is outgoing. 6 for LCM is 12. So 120 is equal to 3Vx plus 2VTH. Equation number 1. Equation 2 क्या है? Here is a VTH and Vx. So VTH minus Vx is equal to 2Vx. So from second equation, what is a Vx value will be? What a Vx value क्या हो सकता है? Here is a VTH minus Vx is equal to 2Vx. So VTH is equal to 3Vx. Vx is equal to VTH by 3. So substitute this in a first equation. But a first equation क्या है? There is 120 is equal to 3Vx plus 2VTH. So 120 is equal to 3Vx plus 2VTH. So 120 is equal to 3 into Vx is VTH by 3 plus 2VTH. 3 get cancel now. 3VTH. VTH is equal to 120 by 3. This value is 40 volts. आ गया? Anyone? Yes. Swapanshil Kumar is given a correct answer 40 volts. Yes. What about RTH? RTH क्या हो सकता है? Can use, there are two methods for RTH. One is RTH is equal to VTH upon ISC होना, शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड आउट कर सकते हैं. अदरवाइज RTH is equal to V upon I ratio. ये केस में डोंट इनैक्ट टू दी एनी इंडिपेंडेंट सोर्सेस, डिपेंडेंट सोर्सेस, बट ये केस में यू टर्न ऑफ इनैक्ट टू दी इंडिपेंडेंट सोर्सेस. आई एम यूजिंग दिस RT is equal to V by I रेशियो यूज कर रहा हूं. सो 10 एम्पियर इज रिप्लेस्ड बाय नाउ. 10 एम्पियर को कैसे रिप्लेस करना है? ओपन सर्किट करो. सो 2 ohms को डायरेक्टली नेग्लेक्ट कर सकते, एलिमेंट इन पैरेलल विद आइडियल वोल्टेज सोर्स है, इसलिए एलिमिनेट कर सकते हैं. So without 2 ohms and without 10 amperes you draw the circuit. Now here 10 ampere is replaced by open circuit, 4 ohms. Now directly minus plus 2Vx, resistance 6 ohms, here 4 ohms plus or minus Vx and 2 ohms
Here you have to connect voltage source and the current I. V by I ratio, find out. Very good. Anirban is very good. 40 volts, 6 ohms or 60 ohms. Looking around. Here is I current is flowing. How much current is flowing through the 4 ohms is here now? Here is the current will be Vx by 4. V volt across 4 ohms is Vx by 4. The current I is coming. Vx by 4 chale gaye. How much the current will flows? I minus Vx by 4. Here plus or minus. Now apply KVL in this loop and KVL in this loop. You get an answer now. So KVL apply karna ho mai. V is equal to here plus minus is equal to 2 into I plus 6 into I minus Vx by 4. So V is equal to 8I minus 6Vx by 4. 2 3s are 2 2s are. V is equal to 8I minus 3 by 2 Vx. Equation 1. Our intention क्या है? V by I ratio होना चाहिए. You have to eliminate Vx. इसलिए you have to take second loop equation. Second loop में equation लिख लो. So now here minus to plus 6 into I minus Vx by 4 plus to minus. So minus 2Vx. Here is the plus to minus. Higher potential to lower potential. So minus Vx is equal to 0. So 6I minus 6 by 4 Vx minus 2Vx. ये पूरा 3Vx लिख सकते ना? 3Vx is equal to 0. So 2 3s are 2 2s are. So 6I is equal to 3 by 2 Vx plus 3Vx. How much the value is? Vx value is to the 6. 6 and 9 by 2 Vx is equal to 6I. So Vx is equal to 12I by 9. This value becomes 3 4s are 3 3s are. Vx is equal to 4 by 3 into I. Substitute here now. In this equation में substitute करो. So V is equal to 8I minus 3 by 2. Vx is equal to 4 by 3 into I. 3 3 get cancelled. 2 1s are 2 2s are. So 8I minus 2I. So this value becomes, so V by I is equal to 8 minus 2. So V by I is equal to 6 volts. So VTH is equal to 40 volts and RTH is equal to 6 ohms. This is the answer now. How many of you are given? Only one. Vinod, Parthi okay, Kushi Kumari okay. So Anirban okay. So how many are now? 4 students are given a correct answer. So A option A nahi dekh lo. So VT is equal to B is option. VTH is equal to 40 volts and RT is equal to 6 ohms. A case is the most important case. Dependent and independent sources are present in the network. Okay. Right. Maybe something similar to this one, but some is the information is given. AB dependent source, only dependent sources are there. So only dependent sources are present in the network. That circuit exists only resistance. There is no VTH, there is no ISC. So इसमें क्या बोलते हैं? Consider the circuit shown in figure. Figure 2 represents, figure 2 देख लो, RTH versus mu है. The variation of the Thevenin's resistance and the value of mu. If the value of the intercept on the RTH axis is equal to x, then the value of x is equal to ये x के टाइम पर what is the now RTH value क्या हो सकता है? What is the value of resistance at x? ये x के टाइम पर, x पॉइंट के टाइम पर what a mu value will be here now? Mu value will be 0. But mu value is 2.
म्यू वैल्यू 2 के टाइम पर व्हाट इज आरटीएच वैल्यू इज, म्यू वैल्यू के टाइम पर म्यू इज इक्वल टू के टाइम पर आरटीएच वैल्यू इज इनफाइनाइट ओम्स आर नॉट, ये फिगर्स के आपको मालूम होना चाहिए। म्यू वैल्यू इज इक्वल टू आरटीएच वैल्यू इज इनफाइनाइट है, ओके राइट, इनफाइनाइट है। सो मैं इंफॉर्मेशन दिए, हिंट दिए, क्या हिंट है, आवर इंटरेस्ट इज एक्स के टाइम पर, एक्स पॉइंट के टाइम पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आरटीएच क्या हो सकता है। एट द टाइम म्यू वैल्यू विल बी 0, वी नो द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस ग्राफ इज म्यू इज इक्वल टू 2 के टाइम पर आरटीएच इज इनफाइनाइट। पहले आरटीएच फाइंड करो यूजिंग v by i रेशियो, गेट ए आंसर नाउ। सो 2 मिनट्स के अंदर आंसर दीजिए। सो देखने के लिए डिफिकल्टी ऐसा लग रहा है ना, तो वेरी सिंपल है। सो म्यू इज इक्वल 2 के टाइम पर आरटीएच इज इनफाइनाइट, देन म्यू इज इक्वल 0 के टाइम पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आरटीएच, ओके गिव आंसर नाउ फास्ट। पहले आरटीएच फाइंड करो। Come on. So now Vs by Is is RTH or not? Vs is equal to Vd or not? So Vd by Is is a RTH or not? Just to apply. Now this is Vd. Is is coming and Vd is here. Apply KCL. KCL apply करो. I'm writing Is or Is is equal to Vd by R plus Vd minus mu Vd by 4k, बस ओवर, कुछ भी नहीं है। 4k स्वपन सेल कुमार is given answer is 4 kilo ohms at x is equal to 4 किलो। चेक करो एक बार, लिखेंगे। सो नाउ Is इज इक्वल, लिखता हूं इधर इस नाउ हियर इज Is इज इक्वल टू Vd बाई R प्लस Vd माइनस म्यू Vd बाई 4k। सो Is इज इक्वल टू Vd कॉमन करो 1 बाई R प्लस 1 माइनस म्यू बाई 4k, इसमें आ दिए Vd माइनस म्यू Vd बाई 4k, राइट। नाउ Is इज इक्वल टू Vd ये 4k प्लस 1 माइनस म्यू इंटू R बाई 4k इंटू R। So Vd by Is will give the RTH or not? This is RTH. RTH value becomes 4k R by 4k plus 1 minus mu into R है, बस ये आ गया। ये RTH आने के बाद what information is given? Mu is equal to k टाइम पर RTH value is infinite. RTH इनफाइनाइट क्या बोल सकता है? दिस डिनोमिनेटर पार्ट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। समथिंग बाय 0 इज इनफाइनाइट, सो दिस वैल्यू बिकम्स इनफाइनाइट 0, RTH वैल्यू इज इनफाइनाइट, सो म्यू इज इक्वल टू 2 इज गिवन, RTH इज इनफाइनाइट। RTH इनफाइनाइट मीन्स डिनोमिनेटर पार्ट 4k प्लस 1 माइनस म्यू के वैल्यू क्या है 2 इंटू R इज इक्वल टू 0 है। So now 4k, here is 1 minus 2 is minus R is equal to 0. R is equal क्या आ गया है? 4k आ गया। R वैल्यू 4 क्या है? ये आंसर नहीं है। R is equal 4 किलो ओम्स। ये कब है? म्यू इज इक्वल टू 2 के टाइम पर RTH इज इनफाइनाइट, देन R वैल्यू है इसमें देना, ये R वैल्यू आ गया ए टाइम पर 4k है। बट आवर इंटरेस्ट क्या है? द टाइम ऑफ x मीन्स म्यू इज इक्वल 0 के टाइम पर क्या है? सो ए केस में क्या करना है, इसमें सब्स्टिट्यूट करो, RTH इज इक्वल टू
सिंपली इसमें सब्स्टिट्यूट करो म्यू इज इक्वल 0, 4k r इज इक्वल क्या है 4k, r इज इक्वल 4k अपॉन 4k प्लस म्यू वैल्यू क्या है 0 है, सो 1 इंटू आर इज r इज इक्वल क्या है 4k, सो हियर इज 4k इंटू 4k बाई 8k, k get cancel, so 4 1 means 2k r not rth is equal to 16 by this one 2 kilo ohms, so 2 is the answer for this question. समझ में आ गया anyone? Very good, very good. खुशी कुमारी, KRU and Harpit Gupta, Anirban, it's a very good response for this question, good response. So क्या आंसर होना चाहिए इधर इस, so is a 2 kilo ohms, right? Simple or not? So just RTH फाइंड करो, म्यू इज इक्वल टू इनफाइनाइट, म्यू इज इक्वल 0 के टाइम पर व्हाट RTH. नाउ और वेरी AB फाइंड द नॉट अन इक्वलेंट बिटवीन AB टर्म्स के बीच में. नॉट अन इक्वलेंट मींस व्हाट इज द IN वैल्यू क्या हो सकता है, व्हाट इज द RTH वैल्यू क्या हो सकता है. गिव आंसर ऑफ विद इन 1 मिनट के अंदर. सो सिंपल 1 मार्क क्वेश्चन के लिए, 1 मार्क क्वेश्चन के लिए. कम ऑन, वेरी सिंपल क्वेश्चन. Very simple. Is it clear now, Sabansil Kumar? 4 kilo ohms नहीं है, that is RTH value is 2 kilo ohms. Anyone? Come on. Yes, very good. So directly बोल सकते हैं, the circuit consists of only dependent sources. Only dependent sources are present. What है now? ISC is equal to 0 amperes बोल सकते हैं. What है VTH is equal क्या है 0 volts बोल सकते हैं. ये केस में RTH फाइंड करो. RTH के लिए क्या कर सकते हैं, come on, what is now RTH? V by I ratio using a V by I ratio or not? V by I ratio. So डायरेक्टली बोल सकते हैं नॉर्मली, हियर इज इधर 20 ओम्स है, ओके, इधर IX है, इसमें करंट इस IX फ्लो है. ये IX will be can be replaced with 20 ohms or not? इधर वोल्टेज सेम है, इधर भी वोल्टेज सेम है, IX करंट विल बी सेम. सो इसलिए IX को 20 ohms में रिप्लेस कर सकते नहीं है. ऐसा भी कर सकते, नॉर्मली करो, गिव आंसर नाउ. सो वेरी सिंपल से, सो IX को एलिमिनेट कर सकते डायरेक्टली. ये 20 ohms है, AB 20 ohms होना चाहिए, IX है AB करंट इज, करंट 20 ohms पैरेलल में है, 20 ohms 10 ohms है, ये 0.5x बोलो. एनीवन? 0. कम ऑन, Vx by I रेशियो नाउ. V is equal to Vx or not? So RT is equal to क्या है इधर इज Vx by I. Now it can be written as, now simplification में here is simplify करो, is a 0.5 Vx and 20 is 10 ohms or not? ये 10 ohms है ना, बीच में 10 ohms है. टेन ओम्स है, इधर इज 10 ohms
20 is 10 ohms. Now apply V, this is I, Vx by I रेशियो क्या हो सकता है, इधर क्या हो गया Vx, I is entering current, Vx by 10 is outgoing current, Vx minus 0.5 Vx by 10. So I is equal to Vx plus Vx minus 0.5 Vx is equal to 10I. So how much this value is? Vx plus 2 minus 0.5 is 1.5 Vx is equal to 10I. Vx by I is equal to, that is 10 by 1.5. So this value becomes 0, 5 3s are 5 2s are, so 5 2, so Vx by I is equal to how much? 20 by 3 ohms. Correct? How many of you have given it? Very good. 6.67. Very good. 6.67. Very good. Very good. Anirban, KRU, Kushi Kumari, 100 by 15. 100 by 15 is how much? Yes, 100 by 15 and 20 by 3 is both are same. Correct. 9.52 कैसा गया? Arpit Gupta. Is it clear now? So whenever dependent sources are present in the network, what is ISC and what is VTH? Okay. So ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है. बोथ सपोज डिपेंडेंट सोर्स को रेसिस्टेंस में रिप्लेस कर सकते हैं. ऑल द केसेस पॉसिबल नहीं है. एक केस में Ix है 20 ओम्स आ रहे हैं, ये भी Ix है, इसको 20 ओम्स रिप्लेस कर सकते हैं 20 ओम्स से. ओके, नाउ गिव आंसर फॉर दिस. नाउ बिलोंग्स टू द मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम के ऊपर है. Now give an answer now the value of RL and X such that the maximum power absorbed by the load. बोल दीजिए 2 मिनट के अंदर, 2 minutes. Come on. What answer is? Maximum power transformation theorem में in a DC case में there are two cases. RL is variable, then condition is RL is equal to RTH. When a source resistance is variable, choose the source resistance value is as minimum as possible. In AC case में there are 4 cases. Only RL is variable, that is the magnitude of ZTH. Only XL is variable, XL is equal to minus XS. Third one is impedance में, load impedance में it consists of reactance is there and resistance is there. Only resistance is variable. At the time RL is equal to RS square plus XL plus XS whole square under root हो सकता है. Third case is, fourth case is total RL is variable, XL is variable, so ZL is equal to ZS conjugate होता है. And another also there, only theta is constant, impedance is variable. At the time ZL is equal to the magnitude of ZS. These are the cases. बोल दिया now. Anyone?
राइट। इसमें नॉर्मली आपको माइंड में रहते हैं दिस नाउ, इसमें दिस अ लोड, एक्चुअली दिस अ लोड, मैं मेंशन कर रहा हूं दिस अ लोड, टोटल इज, ये लोड है, ए टोटल इज दिस अ लोड, दिस इज अ लोड, ओके। आपका माइंड कैसे सोचते हैं, सिंपली ZL इज इक्वल टू ZS कॉन्जुगेट सोचते हैं। बट इफ यू आर फाइंड आउट द ZL वैल्यू इज वेरी डिफिकल्ट और नॉट। ZS कॉन्जुगेट पैरेलल कॉम्बिनेशन है, नॉर्मली पैरेलल कॉम्बिनेशन में लोड्स आर कनेक्टेड, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, आपका घर में लोड्स आर कनेक्टेड ऑल आर पैरेलल। एक केस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए क्या कर सकते हैं, देयर इज, सो अप टू नाउ यूर मे बी स्टडीज, ये भी सीरीज में थे, ये भी सीरीज में, लोड में सीरीज में रहते हैं, सो डायरेक्टली कॉन्जुगेट करते थे। बट हियर इज है, अभी कैसे है, ये पैरेलल में है। ये केस में कैसे कर सकते हैं, नाउ अप्लाई, नाउ हियर इज है, इफ यू आर अप्लाई सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो, then current source in parallel with this will be get, based on that you can replace 10 ohms and J10 इस parallel में आते हैं, but 10 ohm J10 ohms को admittance में कैसे replace कर सकते हैं, why you go for the admittance, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में वेरी इजी से एडमिटेंस फाइंड कर सकते हैं, इसीलिए इन प्लेस ऑफ ZL इज इक्वल ZS कॉन्जुगेट मैं क्या करता हूं, YL इज इक्वल टू YS कॉन्जुगेट करता हूं। ये भी कर सकते ना, YL इज इक्वल टू YS कॉन्जुगेट करता हूं। सो YS कॉन्जुगेट के लिए ये ध्यान में रखना है, लोड पैरेलल में है, इंपेडेंस इज पैरेलल में है, बट सोर्स इंपेडेंस इज सीरीज में है। ZL को ZS भी कर सकते, बट इट विल टेक ए मोर एंड मोर टाइम, इसीलिए क्या करना है, यू गो फॉर दी YL इज इक्वल टू YS कॉन्जुगेट। सो हियर इज YL वैल्यू, YS वैल्यू क्या हो सकता है, 1 अपॉन 10 प्लस J10 R नॉट, 1 बाई ZS। नाउ दिस वैल्यू इज 10 माइनस J10 बाई 10 माइनस J10, ये आ गया, YS वैल्यू इज 10 माइनस J10 बाई A प्लस B इंटू A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, JJ इज प्लस, सो दैट इज 100 प्लस 100 इज 200, सो 10 बाई 200 माइनस J10 बाई 200, सो 0 0 1 बाई 20 इज 0.1 बाई 2 इज 0.5, 0.05 माइनस 0.05 J, दिस इज YS। YL क्या होना चाहिए, YL इज इक्वल टू YS कॉन्जुगेट होना चाहिए, दिस वैल्यू बिकम 0.05 प्लस 0.05 होना चाहिए YL वैल्यू। सो YL वैल्यू करो, कैसे करना है, 1 बाई RL प्लस 1 बाई J20 एंड 1 बाई माइनस JX। सो YL इज इक्वल टू 1 बाई RL, 1 बाई J20 and 1 by minus JX. So YL is equal to 1 by RL minus J by 20 plus J by X, 1 by J, ऊपर जाने के बाद माइनस J। So YL is equal to 1 by RL, my J कॉमन करता प्लस J कॉमन करता हूं, so 1 by X minus 1 by 20। सो YL इज इक्वल क्या है, 0.05 प्लस J 0.05 इज इक्वल टू 1 बाई R प्लस J 1 बाई X माइनस 1 बाई 20। सो कंपेयर करो बोथ साइड, 1 बाई R इज इक्वल टू 0.05, RL वैल्यू, RL ले तो RL ले लो, RL वैल्यू क्या हो सकता है, 20 ओम्स, RL वैल्यू क्या है, 20 ओम्स आ गया, एंड 1 by x minus 1 by 20 is equal to 0.05, ये भी 0.05, उधर जाने के बाद 0.05, 1 by x is equal to क्या आ गया, दिस इज नाउ 0.1 आ गया, 1 by x is equal to 0.1 है, बट x is equal to क्या हो गया, x is equal to 10 volts। सो आंसर क्या होना चाहिए, 20 ohms
and 20 ohms. This value is 20 ohms. This value is 10 ohms. Is it clear now? Very good. Arpit Gupta, okay. Arpit Gupta gives a correct answer. R is equal to 20, and Kushi Kumar also given a correct answer. Is it clear? Is it interesting now? Different or not? So ये ध्यान में रखना है, लोड कैसे है, लोड इस पैरेलल में है, सीरीज में है. So this is now procedure to find out the value of RL and X. Next is A, simple. देख लो, ये वेरी सिंपल क्वेश्चन. ये नॉर्मल क्वेश्चन, डायरेक्टली बोल सकते हैं, विद इन 1 मिनट के अंदर बोल सकते हैं, फास्ट. Come on. Come on. Anyone? Very simple question. No one has given an answer. क्या दिया रेस? A linear circuit has two independent sources, a voltage source and a current source. Voltage source set to 4 volts. 4 volts है. Current source set to 2 amperes. The output voltage is measured to be a 2 volts. सेकंड में क्या है? 2 volts and -2 amperes. ये कैसे है? जस्ट लाइक ए सुपरपोजिशन में लीनियरिटी. यू यूज ए लीनियरिटी. सो हाउ टू यूज ए लीनियरिटी में 4 into linear equation 4k1 plus 2k2 is equal to how much voltage here now? 2. Equation number 1. Second equation में 2k1 2 volts plus minus 2k2 is equal to, here is a 10 volts. Solve करो k1 k2 values. Here is now 6k1 is equal to 12, k1 is equal to 2. k1 is equal to आ गया. k2 is equal क्या हो सकता है? Substitute now. 4k1 2 plus 2k2 is equal to 2 and 8 plus 2k2 is equal to k2 is equal to 2 minus 8 minus 6 by 2. This value becomes minus 3. Okay, minus 3 आ गया. Very good. minus 4 volts कैसे गया? minus 3 आ गया ना. Now substitute now. ये 10 volts measured is 10 volts हो गया ना. Here now voltage source value क्या होना चाहिए? 3 volts होना चाहिए. Means 3k1 and current source value is 4k2 is equal to V. 3k1, k1 value क्या है? इधर is 2 plus 4k2 value क्या है? इधर is minus 3 is equal to V. So V is equal to minus 6 volts is answer. Minus 6. Oh, KRU is given a correct answer. Arvind Gupta is wrong. Niket Koshe is given a correct answer. Kushi Kumar -4 नहीं है. This value is -6 volts using here is a now linearity concept. Just using a linear equation.
ओके ओके, टाइपिंग मिस्टेक, वेरी गुड, राइट. For the current plot I1 versus t milliseconds, I2 versus t milliseconds, V11, V12, V21, V22 क्या हो सकता है? कम V11, V12. सो अभी तक तो क्या पढ़े? ट्रांजिशंस एंड थ्योरम्स खत्म हो गया. सो ऑलमोस्ट थ्योरम्स में थेवेनिन्स, नॉर्टन्स, मैक्सिमम पावर एंड सुपरपोजिशन कंप्लीट किए थे. नाउ मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट्स करेंगे नाउ फास्ट. So what is V11, V12, V21 and V22? Outright I know V11 is come on. हो गया. सो इक्वेशन लिख सकते हैं नाउ. फर्स्ट इज m इज पॉजिटिव और नेगेटिव. कैसे बोल सकते हैं? हियर इज I2 डायरेक्शन इज गिवन, हियर इज I1. ड्रा करो करंट डायरेक्शन. हियर I1 का डायरेक्शन क्लॉकवाइज में है, I2 इज एंटी क्लॉकवाइज में. बोथ आर लिविंग मीन्स mutual induced EMF, self induced EMF are in a same direction. So कैसे लिख सकते हैं now? V11 is equal to 2 milli means 2 milli into dI1 by dt plus m into dI2 by dt 1 into dI2 by dt. बस V12 इज इक्वल क्या है? V12 इज इक्वल टू L2 इंटू dI2 बाई dt, 3 मिली इंटू ए भी मिली है, dI2 बाई dt प्लस 1 मिली इंटू dI1 बाई dt. बस ओके, राइट. व्हाट इज I1? I1 का देख लो. हियर इज टोटल I1 इज फ्रॉम 0 to 0.5. हमारी इस वैल्यू स्लोप इस क्या है? 1 by 0.5 इज 2t. सर ये 2t है. इसका क्या है? इसका वैल्यू है 0.5, 1.5. y2 minus y1 by x2 minus x1. So minus 1 minus 2 by 1.5 minus 0.5. So 1 minus 2t plus k. Some constant आते हैं, plus k or minus k, plus r minus k. I don't want constant. Why? Because L into di by dt constant will be going to 0 or not. A भी देख लो, इसका स्लोप क्या है? 2 1.5 and minus 1 0 0 of minus y2 minus y1 is plus 1, x2 minus x1 is 0.5. इसका वैल्यू क्या है? 2t plus r minus k है, सम k1 और k2. ये आ गया. इसमें करो, सो ऐड करो डायरेक्टली. 2t माइनस 2t प्लस k1, 2t प्लस k2. k2 का जरूरत नहीं है. वाई? बिकॉज डी आई बाई डी टी ऑफ k2 इज 0. इसीलिए टोटल क्या हो सकता है? 2t माइनस 2t प्लस r माइनस k1 प्लस 2t प्लस r माइनस k2. 2 टिकट कैंसिल है. अभी क्या बाकी है? डी आई बाई डी टी इसका 0 है, इसका 0 है. सो व्हाट इज नाउ? होनली I1 इज इक्वल, इसमें dI1 बाई dt में डायरेक्टली आई एम राइटिंग नाउ V1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? इस डायरेक्टली कैन राइट V1 इज इक्वल टू 2 मिली. यार 2 मिली में अभी देख सकते हैं इस 2t इंटू यार इस 10 क्यूब आर नॉट. वाई 10 क्यूब? यार t मिली सेकेंड्स में है, इसीलिए इसका वैल्यू क्या है? 10 क्यूब लिख लो, नॉट अ प्रॉब्लम. इधर इज 10 क्यूब लिख लो, ए भी 10 क्यूब. ओके, समझ में आया ना स्लोप्स का? इसमें भी देख लो यार, इसमें क्या हो सकता है?
ये फॉलिंग डायरेक्ट लिख सकते माइनस 2t इंटू 10 क्यूब, ये भी सेम स्लोप 2t rising 2t into 10 cube plus or minus k3 something, here is minus 2t into 10 cube plus or minus some k4. कांस्टेंट के बारे में आप सोचने की जरूरत नहीं है. Here minus 2t plus 2t get cancel, only the remaining is minus 2t into 10 cube. Is it clear now? Yes or no? Now लिख रहा हूं V1 is equal to V1 is equal to 2 milli 2 into 10 to the power of minus 3 d by dt of 2t into 10 cube plus or minus some k को निकाल दिए because 0 होता है. So here is a plus m into 1 into 10 to the power of 3 di2 by dt. So d by dt of I2 वैल्यू क्या है माइनस 2t इंटू 10 क्यूब प्लस आर माइनस के बोले तो क्या लिखो, नॉट ए प्रॉब्लम. सो V1 इज इक्वल क्या है इधर इज 2t वैल्यू इज डिफरेंशियल इज 2 2 is 4 here is a minus 1 into 2 is a 2. So V1 is equal to 2 volts, correct or not, check करो. V11 और V11 बोलेंगे V11 is equal to 2 volts. Is it clear now? Yes, 2 volts दिए, very good. Anirban is given a correct answer. V11 is 2 volts. What about V12? V12 का इक्वेशन लिखेंगे now. V12 इक्वेशन is V12 is equal to 3 milli into d by dt of minus 2t into 10 cube plus or minus k or k3 or something plus m into 1 into 10 to the power of 3 minus 3 into d by dt of I1 is equal to how much? I1 is equal to 2t into 10 cube plus or minus k. So ये वैल्यू क्या हो गया 3 into 2 is minus 6 हो गया, ये वैल्यू क्या हो गया ए 2 हो गया, minus 6 to minus 4 volts is V12 is minus 4 volts. V12 is how much? No minus 6 है, minus 6 है, right, minus 6 है, ए plus 2 है, correct, minus 4 volts. Yes, 2 minus 4 is correct, KRU, and Kushi Kumar is also correct, V12. What about here is second में 3 मिली, ये भी देख लो m is पॉजिटिव और नेगेटिव, चेक करो पहले. म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF and self induced EMF are both are in the same direction or not? Here is the direction is clockwise, ये anti clockwise. देख लो here is one is leaving, another is entering, so m is considered as m is negative means mutual induced EMF is opposite to the self induced EMF. लिख लो now. So V21 is equal to L1 di1 by dt minus m di2 by dt. This is V21. Next is V22 है क्या? V22 is equal to L2 di2 by dt and minus m di1 by dt. Simply now V21 is equal to L1 वैल्यू क्या है? L1 वैल्यू is 3 मिली. So 3 milli into 10 to the power of minus 3 d by dt of directly 2t लिख रहा हूँ, 2t into 10 to the power of 3 and minus m क्या है इधर is m value will be 2 milli, 2 into 10 to the power of minus 3 di2 by dt क्या है minus or not, minus 2t into 10 cube. So k नहीं लिख रहा हूँ, k तो डिफरेंशियल क्या हो गया 0 हो गया, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ. V21 is equal क्या है 3 to the 6 है, ये प्लस 6 है, ये भी प्लस 4 है. सो V21 इज इक्वल टू क्या है 10 वोल्ट्स. V21 इज 10 वोल्ट्स. V22 देखेंगे. सो V22 इज इक्वल टू
L2 वैल्यू क्या है? L2 वैल्यू विल बी, L2 वैल्यू क्या है? 2 राइट, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 डायरेक्ट लिखता हूं, दैट इज 2d का डायरेक्टली डिफरेंस है, d 2 है ना, माइनस 2t है ना, माइनस 2 एंड 2 इंटू 10 टू पावर 3 लिखता हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं 10 टू पावर 3 एंड माइनस m 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इंटू प्लस I1 बाई 2t 2. सो नाउ V22 इज इक्वल टू, ये आ गया -4, ये आ गया -4, दिस वैल्यू बिकम्स -8 volts. How many of you given the same answer? Very good. Kushu Kumar is the correct answer. KR also given a correct answer. Anirban is not given a correct answer. Study point also not given a correct answer. Is it clear now? This is a concept of how to dot convention का concept के लिए and how to write a KVL equations in these cases. दो concepts from this question, right? And last question, right? और एक क्वेश्चन है, इनपुट इंपेडेंस के लिए द वैल्यू ऑफ K such that the circuit input impedance is pure resistive, वैल्यू ऑफ K क्या हो सकता है? Z इनपुट होना चाहिए, Z in होना चाहिए, सो प्योर रेसिस्टिव होना चाहिए, मीन्स क्या इधर इज इमेन पॉट इक्वल टू 0 करो, गेट आंसर नो, Z in इज इक्वल टू हाउ मच? व्हाट इज Z in? डायरेक्ट फॉर्मूला है ना इसका, डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, Z in इज इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला, यू कैन राइट Z in इज इक्वल टू क्या है, इधर इज फॉर्मूला इज दिस R1 सपोज JXL1, ये इधर से आने के लिए, इधर से इधर आने के लिए हियर इज XM स्क्वायर डिवाइडेड बाय XM इज म्यूचुअल इंडक्टिव रिएक्टेंस है, XM स्क्वायर बाय दिस इज R2 प्लस JXL2 प्लस ये सपोज ZL, ये फॉर्मूला है. हियर इज K वैल्यू होना चाहिए, K इज इक्वल टू व्हाट नो, K वैल्यू इज, K वैल्यू के लिए K इज इक्वल टू m बाई रूट L1 L2. इधर L1 L2 वैल्यूज नहीं दिए, ओमेगा से मल्टीप्लाई करो, ओमेगा से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ओमेगा m बाई इधर इज ओमेगा L1 इंटू ओमेगा L2, ओमेगा m इज ओमेगा m इज हियर इज ए K वैल्यू देना डायरेक्टली, ओमेगा m इज इक्वल क्या ले सकते हैं, दैट इज XM बोल सकते हैं, XM इज इक्वल टू ये XM है K इंटू रूट अंडर ओमेगा L1 इंटू ओमेगा L2. XM इज इक्वल क्या है, K इंटू ओमेगा L1 इंटू ओमेगा L2. सो K इज स्क्वायर करो, XM स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर होने के बाद रूट चले गए, ओमेगा L1 क्या है, ओमेगा L1 मीन्स दिस इज ओमेगा L1, दिस इज ओमेगा L2, सो दिस 10 इंटू ए 40 है, ये XM स्क्वायर आ गया. नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर, नाउ डायरेक्टली Z in इज इक्वल टू R वैल्यू क्या है 10 प्लस J10 प्लस XM स्क्वायर K स्क्वायर इंटू 400 अपॉन R2 प्लस JXL2 प्लस ZL, A20 प्लस J40 माइनस J20, बस ये Z in है. ओके, नो वन हैज गिवन आंसर, नो, अभी तक तो कोई भी नहीं दिए. सो Z in इज इक्वल क्या है भाई, इसमें रियल पार्ट का जरूरत नहीं है बिकॉज ऑफ प्योर रेसिस्टिव होना चाहिए, इसलिए ओनली कंसिडर द इमेजिन पार्ट. सो अभी लिख रहा हूं Z in इज इक्वल टू, Z in इज इक्वल टू 10 प्लस J10 प्लस K स्क्वायर इंटू 400 बाई, इसमें क्या है, इधर इज 20 प्लस J20, 20 प्लस J20, रेशनेशन करो, 20 माइनस J20 बाई 20 माइनस J20 से रेशनेशन करो,
ओनली इंटरेस्ट इज इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0 करो, इसमें इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0 करो, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0 दैट इज 10, इसमें देख लो 400, इसमें मल्टीप्लाई करो माइनस, है ना, ये J10 है, ओके, माइनस k स्क्वायर इंटू 400 इंटू 220 माइनस J अपॉन, इसमें देख लो यार, इस 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, 400 प्लस 400 क्या आ गया, 800 आ गया, इज इक्वल टू 0 है. सो नाउ 10 इज इक्वल टू k स्क्वायर इंटू 400 इंटू 20 बाई 800, 0 0 0 0. So now k square is equal to 4 to the 80 now. So now k square is equal to a0 0 get cancel, 8 8 means k is equal to k square is equal to 1, k is equal to 1 है. So resistor के लिए k value is 1 होता है. Oh, very good. Rohan Singh is given a correct answer. Kushi Kumari, Anirban, very good. K is equal to 1, then only the Z in A is a resistor. So इसमें क्या क्या आ गया? How to calculate whenever the mutual coupling between the two inductors, how to find out the Z in value whenever आप ट्रांसफॉर्मर पढ़ते हैं बट यू आर यूजिंग दैट इज टाइम ट्रांस रेशियो का टाइम पर, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मर है इसलिए ये यूज करना पड़ता है. राइट, लास्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन थेवेनिन इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी टर्मिनल्स ऑफ द सर्क्यूट इज, इसका VTH एंड RTH क्या हो सकता है, इधर VTH, ओके, व्हाट इज VTH एंड RTH इज द लास्ट क्वेश्चन, ओके. So now transformer is there, how to find out VTH, suppose this current is I1, this suppose I2 current, so from this how to write now VTH, here is a dot बोले तो क्या इधर is प्लस आर माइनस V1 है, इधर प्लस आर माइनस V2 है. इफ राइट नाउ केवल इक्वेशन में फर्स्ट लूप में लिखेंगे 10 एंगल 0 इज इक्वल टू 2 इंटू I1, ओके. इसमें भी करंट क्या है, ओनली I1 है, ये प्लस आर माइनस V1 है, ये V1 है, इधर भी 2I1 है, मैं लूप रहा हूं V1 10 एंगल 0 इज इक्वल टू I1, V1 इंड्यूस्ड EMF V1 एंड 2I1, सो 10 इज इक्वल टू 4I1 प्लस V1. I1 in terms of I2 में लिख लो, V1 in terms of V2 में लिख लो. What is from this? V2 by V1 is equal to क्या है, V2 by V1 is equal to 4 by 1, 1 is to 4, N2 by N1 is 4 by 1, I1 by I2 is equal to how much, I1 by I2 is equal to, here is a 4 by 1. So from this 10 is equal to I1 is equal to क्या है, 4I2 and plus V1 is equal to क्या है, V1 is equal to V2 by 4, इक्वेशन 1. सेकंड इक्वेशन देख लो, सेकंड इक्वेशन इज VTH is equal to V2 plus 2I1 or not, 2I1, the current is 2I1, so VTH is equal to V2 plus 2I1, I1 प्लस में क्या ले सकते हैं 4I2, बट I2 इक्वल क्या है, I2 इज इक्वल 0 है, सो V2 इज इक्वल क्या है, VTH इज इक्वल टू V2 है. V2 फाइंड आउट करो, दैट इज अ VTH. फ्रॉम दिस, इसमें से इक्वेशन 1 से 10 इज इक्वल टू 4I2, I2 क्या हो गया, 0 हो गया ना, 4 इंटू 0 प्लस V2 बाई 4, V2 इज इक्वल क्या आ गया 40 वोल्ट्स. सो दैट मीन्स VTH इज इक्वल क्या आ गया, VTH इज इक्वल टू 40 वोल्ट्स. VTH इज इक्वल टू V2 है, V2 इज इक्वल टू 40 वोल्ट्स है. वेरी गुड, रोहन सिंह इज गिवन अ करेक्ट आंसर 40 वोल्ट्स. बट RTH इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, RTH इज अच्छा रहता है इसमें. हाउ टू फाइंड आउट RTH, थेवेनिन इक्विवेलेंट होना चाहिए, RTH होना चाहिए. RTH के लिए यू कैन यूज
V by I रेशियो यूज करेंगे, राइट। नाउ आई एम यूजिंग V by I रेशियो, RTH इज इक्वल टू क्या है इधर इज V by I रेशियो, independent voltage was replaced by short circuit. Now the circuit becomes, here is ये I1 करंट है ऑलरेडी, ये I1, ये 2 ohms है, ये प्लस आर माइनस V1 है, ये 1:4, ये 2 ohms एंड ये प्लस आर माइनस V2 है, डॉट्स आर सेम पोजिशन पे है and here is connect V is here, V by I ratio, I2 will be in this direction, okay. RTH is equal to V by I also equal to V by minus I2 लिख सकते हैं, why minus I2, I is equal to minus I2 है, so I is equal to minus I2, V by minus I2 will give the RTH. Anyone? No one has given answer now. Fast. So अभी I2 equation, ये I2 है. Now I'm writing a KVL equation here now. V, here is a I2, here plus, here is a minus. I2, here V plus V plus 2 minus. This is a minus V2. Here minus 2 plus. This value is देख लो, here is minus 2 plus 2 into, here is the I2 direction is a plus minus है, but I1 direction कैसे देख लो, here is the current direction is I1 here, I1 is I2 minus I1 लिख सकते हैं ना, so 2 into plus 2 into I2 minus I1 is equal to 0, so V is equal to V2 minus 2 I2 and plus 2 I1. और इंटरेस्ट क्या है, V by I2 होना चाहिए, यू एलिमिनेट I1, हाउ टू एलिमिनेट I1, I1 by I2 इज इक्वल टू क्या है 4 है, सो V इज इक्वल टू V2 माइनस 2 I2 प्लस 2 I1 के प्लेस में 2 into 4 I2 लिख सकते, सो V इज इक्वल टू V2 माइनस 2 I2 plus 8 I2, that is plus 6 I2. Equation 1 आ गया. Equation 2, our interest is V2 को eliminate करो. How to now? Write a KVL equation. Here plus or minus. इधर I1 current is flowing. I1 current के टाइम पर क्या है, इधर प्लस इधर माइनस. So minus to plus 2 into I1 minus I2. Okay, minus to plus plus V1, a minus to plus 2 I1 is equal to 0. Now 2 I1 4 I1 minus 2 I2 plus V1 is equal to 0 है. 4 I1 को रिप्लेस करो इन टर्म्स ऑफ I2 में, 4 into I1 is equal to how much here now 4 I2 minus 2 I2 plus V1 in terms of V2 में रिप्लेस करो, that is V2 by 4 or not is equal to 0. Okay, 16 minus 2 14 or not, so here is 14 I2 plus V2 by 4 is equal to 0. 14 I2 is equal to minus V2 by 4. 14 I2 इक्वल क्या है इधर इज माइनस V2 by 4, सो V2 इज इक्वल टू माइनस 56 I2 है. V2 को एलिमिनेट कर सकते, ये केस में V2 प्लस 6 I2 में और इंटरेस्ट क्या है, V by माइनस I2 होना चाहिए. V by माइनस I2 के लिए V2 को रिप्लेस करो, V को क्या करेंगे इधर इज नाउ V is now V is equal to V2 plus 6 I2. So V is equal to minus 56 I2 plus 6 I2. So V is equal to minus 50 I2. So V by minus I2 is equal to how much 50 ohm. So RTH क्या हो गया
50 ohms है, VTH is 40 volts, RTH is 50 ohms. Very good, Prashant Singh. Rohan Singh is given a correct answer. Anirban also given a correct answer. Right? Okay. So इसमें ट्रांसिएंट्स में आई एम नॉट कवर्ड दी दैट इज RL R सर्किट का कवर नहीं किए थे. आप कर सकते हैं, नॉर्मल इजी है ना, फाइनल वैल्यू प्लस इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू टी पावर माइनस टी बाई टाउ. RL का कवर किए थे, 2 कैपेसिटर का कवर किए थे एंड टाइम कॉन्स्टेंट इन्फिनिट के टाइम पर इंडक्टर का बिहेवियर कैसे रहते हैं ये भी कवर किए थे. एंड इन थेवेनिन्स थ्योरम में डिपेंडेंट सोर्स इंडिपेंडेंट सोर्स आर प्रेजेंट, ओनली डिपेंडेंट सोर्स आर प्रेजेंट. इसमें ओनली इंडिपेंडेंट सोर्स आर प्रेजेंट इन नेटवर्क ए नॉट कवर्ड, ये तो नॉर्मल है, आप कर सकते हैं. सो ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर कवर्ड हियर नाउ, ट्रांसिएंट्स, मैग्नेटिक कपल्ड एंड आल्सो थ्योरम्स में. ओके, सो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस थ्योरम्स में थेवेनिन्स, मैक्सिमम पावर, नॉर्टन्स एंड सुपरपोजिशंस में आते हैं. सो नॉर्मली रेसिप्रोसिटी थ्योरम है. सो रेसिप्रोसिटी थ्योरम इज ऑलरेडी V2 by I2 is equal to V1 by A1 or not. So excitation to the response is always a constant है. Okay. So all the best, don't do the mistakes, silly mistakes ना करना है. So even though your concepts में suppose you are strong, but the calculations are most important at the time of examination. एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, ए मिस्टेक्स, कैलकुलेशन, सिल्ली मिस्टेक्स, -2 के प्लेस में +2 लिखते हैं. सो ये इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दो. एंड आई एम जस्ट लेंथी क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस लिए थे बट ऑल कॉन्सेप्ट्स कवर करने के लिए लिए थे. इतना लंबा क्वेश्चंस नहीं आते बट फिर भी इसका कॉन्सेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट के लिए मैं लिए थे. ओके, सो थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. अभी तक तो 3 घंटे तक तो 4 घंटे से अब तो आप कॉन्सेंट्रेट करके आप रेस्पॉन्स दे रहे हैं. सो रियली इज ग्रेट. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर गेट एंड ESC examinations. So I think is these sir Kiran sir and I covered almost all the types of problems. So go to these questions and comment on, suppose any doubts, any clarification, you have to comment in the comment box. Okay, thank you. Any doubts in this case? You want any information? Anyone? How is the problems and give a feedback also in a comment box में comment कर सकते हैं. Yes, how is the problems कैसे हैं? सर डिफिकल्ट है, मॉडरेट है, इजी है? Totally. So close the session now. Yes. Right. So all the best.